सर डीजी सर, शुरू करें। कुछ क्या हो गया? सर अभी तक लोगों ने ज्वाइन किया नहीं है, केवल 2 लोग बाहर के हैं अभी, और उसमें भी एक स्पीकर है। तो थोड़ा वेट कर ले 5 मिनट सर, आपकी अनुमति हो तो। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है।
हबीब साहब शुरू करेंगे क्या? मुझे लगता है कि लोग बाहर के बहुत ज्यादा ज्वाइन नहीं किया है, अपने ऑफिस के ही लोग हैं। आपकी अनुमति है तो शुरू कर दें। कर सकते हैं, है ना, कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे लोग। जी जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विज्ञान के सातवें बार के थीम में ज्वाइन कर चुके हैं। एंड एज ऑल ऑफ अस know that this program started in September 2021, and this was a year-long program uh, which was basically formulated by Department of Science and Technology, the State Science and Technology program. Two persons who were behind this formulation process were Dr. Devpriya Datta ji, who is scientist G and advisor at DST, and Dr. Rashmi Sharma. These two are the important persons who formulated the entire year program. We are fortunate enough at MP Council of Science and Technology that this entire year nationwide program was initially launched from Madhya Pradesh Council of Science and Technology in September, on 1st of September 2021, which was inaugurated by Minister of State, Science and Technology, Space, Earth Sciences, Prime Minister Office, Dr. Jitendra Singh ji, and he inaugurated this program in September, and most likely it is expected that we will be concluding this program in August 2022. Basically, this was based on the call given by our Honorable Prime Minister on 15th August 2021 that we should celebrate 75 years of independence in different ways. So, Department of Science and Technology also thought that Vigyan Utsav should be initiated. And with that, some 12 themes were identified. In September, the first theme was Science, Technology, Innovation Institutions at the state level. Then in October, it was Human Resources Development. In November, it was Research and Development Infrastructure. In December, it was Indigenous Technologies. January, Innovation and Startups. February, Science, Communication and Popularization. And this month's theme, March 2022, it is Women in Science and Technology and Science and Technology for Women. This is a very important theme because this month is also dedicated to the International Women. This International Women's Year is also celebrated on every 8th of March. This year also it was celebrated at a very high level at the national level, and Department of Science and Technology had especially organized one program on 8th of March, which was graced by Honorable Minister of State Science and Technology, Government of India. And next year it is going to be Science and Society, then Future Technologies, then June it will be Basic Science for Atma Nirbhar Bharat, and in July it was thought that Industry and Atma Nirbhar Bharat means linkages between industry and academia. This was thought in July, and in August it will be last theme on intellectual property rights, which will be basically taken up by TAIF and Government of India. So these are the programs which are conceived for the entire year, and basically this was thought that every council should organize this program, especially at the state level. They should find out what is the STI ecosystem within the state and addressing to that particular theme. We welcome you, Madam Palta, probably joined. We are really thankful to you that you have joined with us. Today's program is on women in STI and STI for women. And our chief guest of today's program is Dr. Renu Chen, who is Vice Chancellor, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, and a very special guest, Honorable Padma Shri, Madam Dr. Janak Palta McGillian, and she is social worker and director of Legal Organization, and she has very kindly consented to be part of our program. And she has joined also because most likely she will be at the airport. It has been learned that she will be leaving for some other place, and she has accepted our request and she has joined with us. So we extremely thank you, madam. Now with this, I would request our Director General, Dr. Anil Kothari, to kindly give the welcome address.
सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अनुरोध पे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर जनक पालिता, पद्मश्री, अ, जो आज हम सब लोगों के लिए बड़ा अवसर है उनकी उपस्थिति। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रेणु जैन, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ डीएवीवी इंदौर, डॉक्टर रश्मि शर्मा, साइंटिस्ट एफ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड डॉक्टर अनुराधा सिंघई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेडमेप भोपाल, डॉक्टर नीलम कपूर, हेड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, prestigious institute of this region, AIMS Bhopal. The program coordinator, Dr. Manisha Joshi, and her team. ये बड़ी बात है कि आज हमारे वुमेन साइंटिस्ट एंड स्टाफ द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ काउंसिल तस्मीम हबीब जी, all my colleagues, scientists, and people, those who have joined this today's program. हबीब साहब ने कहा कि ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर आत्मनिर्भर भारत, इस थीम को ध्यान में रखते हुए पिछले अगस्त से इस सीरीज चल रही है, जिसमें विविध विषयों पर हर प्रदेश की क्या स्थिति है उसको लेके हम बात करते हैं, स्पेशली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जो इस बार की थीम है वो वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन। सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से? नमस्ते, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, अभी चेक इन किया है बनारस बीएचयू में। मेरा फ्लाइट के लिए 12:15 पे जाना है। मैं बहुत सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ मैपकोस्ट का और डॉक्टर अनिल कोठारी जी और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं और गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं। मैं आपको सबसे खुशी की बात ये बताना चाहती हूँ कि मैं 1985 में चंडीगढ़ छोड़ के इंदौर आई इस कॉल पर कि डीएसटी का सैंक्शन एक प्रोजेक्ट बहाई वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, जिसमें आके मुझे प्रोग्राम शुरू करने थे जहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैं 1 जून 1985 को इंदौर आई और डीएसटी के प्रोजेक्ट में मैंने डीएसटी के प्रोजेक्ट के साथ जीरो से काम करना शुरू किया और आज मेरा 37th ईयर है। विमेन एम्पावरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करके जहाँ भी आज हूँ, तो मैंने सोचा मैं बताऊँ आपको कि मैपकोस्ट उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती थी। डॉक्टर टीएस मूर्ति, सभी लोग आते थे हमारा काम देखने। हमने बहुत सारी वर्कशॉप की और आज मुझे आपने इनवाइट किया है कि मैं आपको अपने कुछ वो काम शेयर करूं जो कि मैंने खास तौर पर टेक्नोलॉजी में किए हैं। इसके जो बड़ा प्रमुख तौर पर है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है सोलर कुकिंग, सोलर ड्रायर्स और सोलर फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के साथ उनको एम्पावर करना। और इसके लिए इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड जिमी मगिलिगन, जिन्होंने ब्रिटेन छोड़ के मेरे साथ रहकर सोलर, सबसे पहले सेंट्रल इंडिया का पहला सोलर किचन बनाया। उसको देखकर आदिवासी लड़कियां जो धार, झाबुआ वगैरह एरिया से ओवरऑल ट्रेनिंग लेने आती थी, उसमें
उन्होंने जब देखा कि सोलर कुकर पे खाना बन सकता है, यहाँ पर 100 लोगों का बन रहा है, तो हमारे घर में भी बन सकता है। तो उस टाइम पर हमारे पास भारत सरकार ने सोलर बॉक्स कुकर सब्सिडी पे देने शुरू किए थे 200 रुपए पे। और मैंने वो कुकर उनको दिखाया, एक कुकर लाके, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला तो हमारी मुर्गी और हमारी बकरी जो है इसको हिला देगी, और ये कुकर हमारे गांव में काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने सोलर पैराबोलिक कुकर मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, हम लोगों ने देने शुरू किए। तो महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी। मेरा जो बॉक्स कुकर का पहला अनुभव था वो ये था, बहुत लोगों ने बॉक्स कुकर लिए थे, लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि यूज कैसे कर रहे हैं। दूसरा, वो जो फ्री में कोई टेक्नोलॉजी मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करते लोग, उसको सीरियसली नहीं लेते। तो हमने उस एक्सपीरियंस से सीखकर सबसे पहले 1 वीक की ट्रेनिंग उन लड़कियों को देना शुरू की जिसने कहा कि मुझे ये कुकर चाहिए। तो आप, मेरे पीपीटी है आपके पास, यूट्यूब पे भी ये देख पाएंगे कि किस तरह से सोलर कुकर, जब महिलाएं ट्रेनिंग लेने के बाद 10% पैसे उन्होंने दिए, वो कुकर्स कुछ एनजीओज, कुछ चैरिटीज ने हमें कहा कि आप दे दो गरीब महिलाओं को। हम धुएं में खाना बनाते महिला की फोटो देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो मेरे हस्बैंड और मैं भी ऐसा कहने लगे कि क्योंकि हम लोग गांव में जाके रहते थे, महिलाएं 100% महिलाएं लकड़ी पे ही खाना बनाती थी, जंगल कट गए बहुत तेजी से। हम कहते थे कि कुकिंग इन स्मोकी किचन्स इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो उस वायलेंस को फील करके हम लोगों ने, और एनवायरमेंटलिस्ट हम दोनों, मैं यूएनईपी में ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए अर्थ समिट में गई और वहां से कमिटमेंट करके आई कि आई विल गिव एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू दीज गर्ल्स अनलेस एंड अनटिल दे यूज इट। वो यूज करें इसको और वो खुद जाके अपने अपने गांव में उनकी लाइफ में हैजर्ड दूर हो सके, वो स्मोक फ्री लाइफ लीड कर सके। तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे 26 साल के कार्यकाल में 500 के करीब ट्राइबल एरिया में गए पैराबोलिक कुकर, जिस कुकर के परिणाम 10 साल बाद हम लोगों ने 2010 में गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर में है, उनके स्टूडेंट्स मेरे साथ इंटर्नशिप करते थे, उनको एड्रेस दिए, गांव में जाके वो लड़कियों की, महिलाओं की स्टोरीज लेके आओ कि फीडबैक क्या हुआ वो कुकर्स का। तो मुझे लगता है आपको भी सबको बहुत शॉकिंग लगेगा, मुझे जितना शॉकिंग लगा कि पहली बात ये थी कि वो कुकर, महिलाओं ने कहा हमारी इज्जत बच गई, क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और रेप तब होते थे जब जंगल दूर हो गए, उनको 2-2, 3-3 रात लकड़ी लेने जाना पड़ता था। तो मेरे लिए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो बात याद करती हूँ कि सोलर कुकर का रिलेशन केवल धुएं से नहीं था, केवल जंगल कटने से नहीं था, महिला की गरिमा के साथ, उसकी डिग्निटी के साथ। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब हम बच गए, दूसरी बात सिक्योरिटी, सेफ फील करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में भारी लकड़ी का लोड ऊपर चलते हैं तो उनके बच्चों, उनका मिस कैरेज हो जाता है। तो ये 2 बातें एक महिला के जीवन की। एक और लड़की ने बताया कि जो धुएं, जब हम खाना बनाते थे चूल्हे में तो कोई भी घर का बच्चा पास बैठा तो वो हाथ डाल लेता, तो बर्न केस बहुत होते थे। तो ये तीसरी बात थी। और उसके बाद लेकिन वो महिलाओं ने वो कुकर, ट्रेनिंग थी, उनको यूज करने आते थे, उन्होंने अपने घर में घर का खाना बनाना, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में कुछ नमकीन बनाना, कुछ बिस्किट बनाना, कुछ बनाना मटरी बनाना, त्योहार पे, भगोरिया पे, ऐसी चीजें बना के उसको अपने हाट बाजार में बेचना। तो इनकम जनरेशन शुरू हो गई। उसके बाद मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में और उस साइड में
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने हमारे से ट्रेनिंग ली, तो माइक्रो क्रेडिट ग्रुप्स की भी एज ए ग्रुप भी उनका बहुत सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला कोष ने हमारे उस सेंटर को, उसका नाम मैंने बाद में दिया बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल विमेन, तो वहाँ हमने मतलब कम से कम नहीं तो उस टाइम पर 26 साल में 6000 महिलाओं को एम्पावर किया, ट्रेनिंग लेके गई, और उन्होंने यूज किया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और अभी सस्टेनेबल 5 जो है वो भी लेकर जो डोमेस्टिक पोल्यूशन से बची महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाओं को डोमेस्टिक पोल्यूशन से बचाव हुआ, पेड़ लगाने भी शुरू किए और पेड़ कटने भी बंद हुए। और इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि उनके परिवार के लोग उनकी ज्यादा इज्जत करने लग गए हैं। वो एक नई टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जब एक ट्राइबल्स ने कभी देखी नहीं थी झाबुआ अलीराजपुर के इंटीरियर एरियाज में। और इनकम जनरेट, उन्होंने वाटर बोर्न डिजीज कम की। ये मेरा डेटा सारा रिसर्च डेटा है, जो मेरी पीएचडी की एक बुक है, उसमें भी ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का महिलाएं एजेंट बन के गई जब उनको साइंस टेक्नोलॉजी की। ये एक डोमेस्टिक कुकर उनको जब मिला, फिर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फूड प्रोसेसिंग करना शुरू की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी के वाटर बोर्न डिजीज कम की। उन्होंने लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी लकड़ी इकट्ठे करने के कारण, वो लड़कियां अब स्कूल जाने लगे, उनके परिवार के बच्चे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बूढ़ी माता ने कही कि मेरे बच्चे सब शहर चले गए हैं और अब हमें बुढ़ापे में, मैं तो लकड़ी नहीं ला सकती, पर मेरी बहू ने बहुत अच्छा किया है, वो खुद तो शहर चली गई है लेकिन वो मुझे सोलर कुकर दे गई है, तो अब मैं सोलर कुकर पे आराम से, मैं और मेरा ओल्ड हस्बैंड, हम लोग अपना खाना आराम से बनाते हैं। तो ये फिर सोलर की चाय की दुकान खोली, एक टेमला करके गांव था वहां पर धार जिले में। तो इस तरह से ये मैं बात बता रही हूँ आपको 1985 से 2011 तक। वहाँ से रिटायर होके मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक गांव में मेरा घर बनाया, आधा एकड़ ज़मीन पे, जिसमें हम लोग सारा कुछ ऑर्गेनिक उगा के खाते हैं। तो मैंने इसको जोड़ के शुरू किया काम, ऑर्गेनिक खेती करना, सब्जी उगाना, फल उगाना, अपने लिए खाना और उनको बेचना। तो उससे काफ़ी सारी महिलाएं और उनके परिवार ऑर्गेनिक फार्मर भी बने हैं, और उन्होंने अपने खेत पे सोलर कुकर लगा के और सोलर ड्रायर लगा के फूड प्रोसेसिंग करके भी अपने लिए भी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड अपना ये किया। और अभी उसके साथ बहुत सारे लोगों ने फूड प्रोसेसिंग में, मैंने लड़कियों से काम शुरू किया, और एक औरत ने कहा ये जेंडर फ्रेंडली कुकर है, क्योंकि हमारे, ये वर्ड नहीं यूज किया उसने, पर उन्होंने बताया चूल्हे पे खाना बनाना सारी उम्र हमारा काम था, हमारे घर के आदमी कोई भी बाहर से आता है पहले फटाफट उसको अपने हाथ से चाय बना के, कुछ खीर बना के खिलाते हैं, तो थोड़ी हमें राहत मिली है। फिर महिलाओं ने यह भी बताया कि ये कुकर ऑटोमेटिक खाना बनाता है, जैसे दाल रख देते हैं तो हमें उसको हिलाना या कुछ करना नहीं पड़ता, पैराबोलिक है, उस पर तल भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं। एक और उन्होंने इनोवेशन किया कि उनके गाय और जो जानवर हैं उनका खाना भी उसके ऊपर बनाने लगे, दलिया वगैरह सब। तो पशु आहार बनने लगा, कुत्ते का खाना बनने लगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होने लगा। और ये सब चीज़ों के कारण फिर मैं गांव में आके भी मैंने ये जब शुरू किया, तो उसके बाद भी अभी तक मिला के 500 सोलर कुकर मेरे माध्यम से और गए हैं। तो 1000 कुकर मेरे आज से 2 महीने पहले गए, लेकिन उसके बाद अब एक लड़का, मेरी आदिवासी ट्रेन की हुई लड़की का लड़का मैकेनिकल इंजीनियर मेरे पास रहकर बना है, और उसने डे स्टार कुकिंग सोल्यूशन कंपनी बनाई है, और उसने पिछले 1.5 महीने में 26 सोलर कुकर बेचे हैं, बॉक्स कुकर। तो मेरा केवल इतना कहना है कि मैं मेंटरिंग भी कर रही हूँ। मैं मेरे घर पे जहाँ रह रही हूँ, मेरे पास 13 प्रकार के सोलर कुकर हैं, एक सोलर किचन है जो ऑटोमेटिक चलता है, जिसको देखकर लोग खरीदना चाहते हैं। और अभी बहुत महंगा हो गया है। एलपीजी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की,
कि एलपीजी अभी रिफिल भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो कुकर एक बार लगा तो 10 साल के लिए कुछ भी नहीं लगता। तो मेरा काफी सालों से मैं भारत सरकार को और मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम में भी मुझे बुलाया जाता रहा है। मैं कहती रही हूँ कि आप सोलर कुकर के ऊपर सब्सिडी दे, महिलाओं को दो। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप मैपकोस्ट हमारी तरफ से स्पेशल रिकमेंडेशन करें, और मैं मैपकोस्ट को इनवाइट करना चाहती हूँ कि एक बार आप सनावदिया आए और आके देखें। मैंने 1 लाख लोगों को सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, और मेरे से सोलर ड्रायर, टनल ड्रायर जो सिर्फ 15,000 रुपए में बन जाता है, उसको देख कर, सीख कर एक मैकेनिकल इंजीनियर, आजकल मैं मेंटरिंग कर रही हूँ स्टार्टअप्स के लिए। तो वो अभी वरुण रहेजा, जो इंडिया का पहला सोलर ड्रायर वाला लड़का है, जो फोर्ब्स 30 की, अंडर 30 की लिस्ट में आ गया है, और 5 दिन से वो लंदन में है, उसको यूरोपियन यूनियन ने बुलाया। तो अगर एक लड़का इतना आगे बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश की महिलाएं। मैं चाहती हूं कि महिलाओं को कुकर देने के लिए सिफारिश की जाए। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करती हूँ कि मेरी फ्लाइट जाने वाली है। तो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, अगर मुझे उसका उत्तर पता होगा तो मैं जरूर दूंगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। आपके इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप हम लोग के साथ ज्वाइन आपने किया, एयरपोर्ट से आपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। आपने बताया कि 6,000 महिलाओं को आपने सशक्तिकरण किया है, 6,000 महिलाओं का। उसके अलावा आपने कहा 1 लाख लोगों को आपने सोलर कुकर्स भी उपलब्ध कराए हैं। और आप जिस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं वो बहुत मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आशा करता है कि भविष्य में भी जब भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी परिषद को, आप सदैव हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय डॉक्टर रेणु मैडम, जो माननीय कुलपति महोदया है विश्वविद्यालय इंदौर की, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। और एक स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर नील कमल कपूर, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी एंड लैब और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल की, उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का वीडियो है हमारा, स्पेशली इस विमेन इन एसएनटी एंड एसएनटी फॉर विमेन थीम के ऊपर, जो भारत सरकार ने बनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाया जा रहा है। वो कृपया आप लोग उसको एंजॉय करें। When we empower the women in family, we empower the entire household. When we help with the women's education, we ensure that the entire family is educated. The world needs science, and science needs women. Women today have made substantial advances in science. Women are now changing the world through their discoveries and proving to be a role model for the younger generations. In history, many impact-making research by women have transformed the present-day world that we live in. From the discovery of the DNA to the discovery of a comet, from exploring the depths of ocean to flying in space, the accomplishments of women are unparalleled. Despite this, we still need a world where women are encouraged to do science, where women are provided adequate support to balance research and motherhood and judge them purely on the merit and impact of their work. Department of Science and Technology, through its network of S&T councils, is celebrating Vigyan Utsav with the theme Women in Science and Science for Women in the month of March. The program intends to showcase the STI empowerment of women in the country, making them the key drivers of strengthening the STI ecosystem in the country. Let's honor the scientific legacy of women by committing to encourage young women to pursue a career in science.
बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच में, क्योंकि हमारे इस महीने का थीम जो अभी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, विमेन इन एसटी एंड एसटी फॉर वुमेन, मध्य प्रदेश में जो कुछ ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी महिलाएं जो एम्पावर्ड हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इसी कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एन जैन मैडम, माननीय कुलपति महोदय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारे बीच में मौजूद है। उनको कहीं और व्यस्तता के कारण हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल को अलग रखते हुए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कृपया मुख्य अतिथि का उद्बोधन प्रदान करें। जी नमस्कार जी नमस्कार सर। मैं थोड़ा अभी जरा वो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, 1 मिनट। जब तक सर 1 मिनट में जरा वो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ सर। जी प्लीज। हमने इस कार्यक्रम में इस प्रकार से लोगों को आमंत्रित किया है कि कुछ तो जो हमारे मध्य प्रदेश में अच्छे ओहदों पर जो लोग हमारे यहाँ पर हैं, उनको भी अनुरोध किया है। उसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वाइस किरण प्रोग्राम है, वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें जो वाइस किरण प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो लोग उस वाइस किरण के अंतर्गत आते हैं, उनमें से भी कुछ स्पीकर्स को बुलाया है, जिसमें हमारे बीच में डॉक्टर शुभ्राधर हैं, अवार्डी हैं, IITM ग्वालियर में है। डॉक्टर दीपा अय्यर हैं, अवार्डी हैं, जो हमारी परिषद में ही कार्यरत हैं। इसी प्रकार से हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज भी जो मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा उपलब्ध कराया गया था, उसमें डॉक्टर पूजा दुबे पांडे हैं, प्रोफेसर कामिनी जैन है, मिसेस शालिनी सक्सेना है। आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय कुलपति महोदया से कि कृपया अपना उद्बोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कोई हमारे यहाँ भी एक दीक्षांत समारोह था, तो थोड़ा सा इसको जल्दी में बनाया है। अगर कोई गलती हुई तो पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण और मैपकॉस के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कोठारी जी, और सभी जो मैं देख पा रही थी इसमें, माननीय जनक पलटा मैडम, नीलिमा कपूर जी, और जो भी जितने भी एम्पावर्ड वीमेन है अपनी, उन सभी को का मैं आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपने मैपकॉस को, कि आप लोग वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैं समझती हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला किसी भी तरह से 2 लाइन जैसे है कि बल बुद्धि शौर्य में कमी नहीं, इतिहास सदा से साक्षी है। जो महिलाएं हैं वो बुद्धि में और बल में किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे नहीं है। सच कहा जाए तो थोड़ा सा आगे ही है, लेकिन उनको अभी तक अवसर नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इसलिए उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं, जो अपनी संकल्प शक्ति की वजह से, जो कहा जाता है कि जो अगर ठान लेती है तो करके रहती है, इसके बल पर उन्होंने अभी तक ऐसी ऐसी खोजें की हैं, जिनमें से कुछ नाम अभी मैंने भी इसमें इंक्लूड किए इस अपनी पीपीटी में, जो थोड़े से लेना चाहते थे। इसमें कुछ विदेश के भी और अपनी भारत की महिलाएं भी हैं। तो बहुत आगे महिला अपनी संकल्प शक्ति के बल पर बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और जहां तक साइंस की बात है, तो साइंस का भी एक थोड़ा सा बचपन में ही एक तरह से डर भर दिया जाता है, क्योंकि मैं खुद ही मैथमेटिक्स में रही हूँ। तो एक साइंस भी एक तरह का मस्तिष्क में एक शुरू से ही ऐसा रहता है, उसके प्रति यदि डर बैठ जाए तो ठीक है, बाकी अदरवाइज साइंस कुछ भी नहीं, या मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं, एक तरह का तर्क शास्त्र है। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज नथिंग बट लॉजिक। और मैथमेटिक्स तो इतना स्वाभाविक है कि प्रकृति में आप जहां देखें वहां आपको मैथमेटिक्स दिखेगा। पूरी प्रकृति में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। पूरी प्रकृति में जहां भी रचना है वो पूरी आपको सिमेट्रिक दिखेगी। सिमेट्री इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। तो हर जगह आपको मैथमेटिक्स की प्रकृति में परिलक्षण दिखाई देगा।
आइंस्टीन भी कहते हैं कि पूरा जो प्रकृति ने, भगवान ने जो यूनिवर्स को रचा है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ही रचा है। पूरी प्रकृति में मैथमेटिक्स का जो भी नियम है, जैसे ग्रेविटी है, तो बहुत पहले एक बार उसका हमने देखा था कि मतलब सभी जानते हैं कि वो जो एक सेब गिरने से उनको, न्यूटन को उसका एहसास हुआ, लेकिन ये एहसास हुआ पहले से ही, वो तो था अपनी जगह, तो ग्रेविटी का नियम तो था। तो प्रकृति के जो अनसुलझे नियम है उनको खोजना ही एक तरह से शोध का उद्देश्य होता है, और वो सारा हमारी स्त्रियां बखूबी कर सकती हैं, कर रही हैं। और आज तो हम देख रहे हैं, मुझे खूब याद है जब हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे तो मेरे साथ पूरे 35 के बैच में ओनली हम लोग 2 लड़कियां थे। पर अब जो हम देखते हैं तो मैथमेटिक्स की क्लास में भी, चाहे वो कोई भी साइंस का हो, लड़कियां ज्यादा आगे आ रही है। लड़कियों का जो प्रतिशत है वो बच्चों को आउट, मतलब दे आर आउट नंबरिंग बॉयज, तो बहुत आगे जा रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे अभी हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह जो हुआ, उसमें लड़कियों को जो गोल्ड मेडल थे वो सभी साइंस में भी मिले, सभी विषयों में मिले, और उनका नंबर करीब 2/3 गोल्ड मेडल पाने वालों में लड़कियां थी और 1/3 लड़के थे। तो ये सिद्ध करता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो लड़कियां भी बहुत आगे जा सकती हैं। अभी जैसा हम वीडियो में देख रहे थे, माननीय मोदी जी कह रहे थे कि एक लड़की को पढ़ाना मतलब पूरी जनरेशन को शिक्षित करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और साइंस और टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है कि उसमें कोई बाधा नहीं अगर लड़कियां उसको अपनाती हैं, क्योंकि बल, बुद्धि और शौर्य में कोई किसी भी तरह का कमी नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बल, बुद्धि और शौर्य और संपदा, सभी के अधिष्ठात्री जो हमारे भारतीय संस्कृति में वो देवियां ही मानी जाती हैं। तो इसलिए जो अपना व्यवहारिक जीवन में भी हम इसको सार्थक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो स्त्रियां हर जगह आगे आ रही हैं, उनकी जो उड़ान है उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए साइंस कोई उनके लिए बाहर नहीं है, अब आगे। और साइंस में तो विशेष तौर से केवल शारीरिक श्रम की जरूरत भी नहीं होती, आपको अपना मेंटल रूप से आपको समर्थ होना चाहिए, तो वो महिलाएं तो बखूबी कर सकती है। प्रकृति ने ही उन्हें जैसा हम जानते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू जब देखते हैं तो स्त्रियों में जो 2 जीन होते हैं एक्स एक्स, उनको प्राकृतिक रूप से ज्यादा बलशाली भी बनाते हैं, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। फिजिकली तो हम सब जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में थोड़ी में फिजिकल ताकत कम होती है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी उनके लिए कोई बात नहीं है। और जितने सोफिस्टिकेशन से जो स्त्रियां जो रिसर्च और शोध और जितनी संकल्प शक्ति से, जितने फोकस होके कंसंट्रेशन के साथ जो कर सकती हैं, वो पुरुषों में अब अभाव होता जा रहा है, क्योंकि पुरुषों की दृष्टि बाहर ज्यादा रहती है और स्त्रियां थोड़ी सी अंतर्दृष्टि रखती हैं। तो अब स्त्रियां बहुत आगे आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा अपनी शेयर करूंगी जो मैंने जो स्त्रियों के अचीवमेंट्स के बारे में बनाई है। ये सभी सब बहुत वेल नोन है हमारे लिए। लीलावती, एक्चुअली लीलावती के ऊपर एक हमारा बहुत बड़ा भास्कराचार्य 6ठी शताब्दी के मैथमेटिशियन हुए हैं, ये उनकी डॉटर थी और किसी कारण से उनका विवाह कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने खुद भी मैथमेटिक्स सीखा, और ये जब छोटी बच्ची थी तभी के समय की बात है, बहुत पुरानी, तो जो छोटे छोटे प्रश्न पूछा करती थी जब उनके पिताजी पढ़ाते थे गणित को, तो उन्हीं प्रश्नों पर आधारित ये एक लीलावती पूरा अलजेब्रा की पुस्तक है बीज गणित की, जो कि भास्कराचार्य जी ने लिखी गई है। और 6ठी शताब्दी की पुस्तक इतनी ज्यादा आज भी बहुत प्रासंगिक है। ये इसके प्री इंडिपेंडेंस की रही है कादम्बिनी गांगुली जी। शी वाज नॉट ओनली द फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, अपनी ब्रिटिश एम्पायर की फर्स्ट ग्रेजुएट थी, और उन्होंने लेकिन मेडिकल की, वेस्टर्न मेडिकल मेडिसिन में ट्रेनिंग ली और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया, और 1886 में इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की उस जमाने में। अन्ना मणि जी भी उसी समय की है, और इन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में पढ़ाई की। उसमें सबसे पहले फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री पाने वाली पहली स्टूडेंट रही, और उन्होंने सोलर रेडिएशन पर मेटीरियोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम किया और पुणे में, और रिसर्च और बहुत सारे सोलर रेडिएशन पर काम करके पेपर्स बनाए, और उनको KR रामनाथन मेडल मिला इन 1987 में। मैरी क्यूरी का नाम तो हम सब जानते हैं,
जो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है, मतलब पहली लेडी है जिनको नोबेल प्राइज मिला, और अभी तक के इतिहास में पहली लेडी है जिनको मल्टीपल नोबेल प्राइज मिले फिजिक्स में भी, और 2 डिफरेंट सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। और जो रेडियम की खोज का श्रेय उनको ही दिया जाता है। और खास बात यह है कि दोबारा उन्होंने अपनी बेटी के साथ 1911 में फिर से केमिस्ट्री में प्राइज जीता। आनंदी बाई जोशी जी भी आजकल साईं बाबा की सीरियल में भी इनके ऊपर बेस्ड एक आया था पूरा आर्टिकल, और वो विमेन, उन्होंने भी उस समय एज ऑफ 21 में भी उन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन में अपना ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद इन्होंने भी कोल्हापुर में प्रैक्टिस की, और पेंसिल्वानिया से उन्होंने डिग्री ली थी 1986 में। आसिमा चटर्जी भी उन्होंने वेल नोन केमिस्ट है, और उन्होंने सेकंड वुमन टू बी कॉन्फर्ड डॉक्टरेट डिग्री ऑफ साइंस बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन हर रिसर्च ऑन द केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उस समय से स्त्रियां अपने सफलता की परचम लहराती आ रही हैं। राजेश्वरी चटर्जी उस समय she was the only woman on the faculty of Indian Institute of Science. She retired as professor and chairperson of the Department of Electrocommunication Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore. कल्पना चावला का भी नाम हम लोग सब जानते हैं। उनको कहा कहते थे कि शी इज ए टेरिफिक एस्ट्रोनॉट, और अपनी पहली उन्होंने स्पेस यात्रा पूरी कर ली थी, और उसके बाद जब दोबारा गई थी स्पेस शटल में, तो वो 16 लोगों के साथ, और अपने मंजिल से जस्ट डेस्टिनेशन से 16 मिनट पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हम लोग सब उनको कभी भूल नहीं सकते। एक इंडियन एस्ट्रोनॉट होने का सबसे पहले उन्हें गौरव मिला था, और हम लोग भी उनको बड़े हमेशा सम्मान के साथ याद करते हैं। इंदिरा हिंदुजा जी को फर्स्ट उन्होंने जो IVF तरीके से जो फेलोपियन ट्यूब में उन्होंने, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने बेबी के जन्म को दिया था, और इंडिया की पहली डॉक्टर थी जिन्होंने IVF तरीके से फर्स्ट बेबी को डिलीवर करवाया था। वो बच्ची भी अब शायद काफी बड़ी हो चुकी होगी। शुभा तुलेजी तुलेजी को शादी स्वरूप भटनागर मिला है, और वो TIFR में काम कर रही है, और फिर से अपनी सफलता की परचम लहरा रही हैं। डॉक्टर अदिति पंत, ये ओशनोग्राफी और जियोलॉजी में इन्होंने इंडियन एक्सपेडिशन जो अंटार्कटिका तक का था उसमें उन्होंने भाग लिया था 2 बार। टेसी थॉमस को हम लोग सब जानते हैं, ये एक मिसाइल वुमेन इनको कहा जाता था, और बहुत ही शार्प थी पढ़ने में। सभी भाई बहनों के साथ इनकी मदर भी उसी समय एक टीचर रही, और फादर को कुछ बीमारी हो गई थी थोड़ी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स ली, लोन लिया, लोन लेकर पढ़ाई की, और उसको बिल्कुल भी उन्होंने पढ़ना आगे बढ़ती रही आगे। और खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनको वहां पर अपॉइंट किया था इसरो में, और उसके बाद अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल के लिए वो इंडिपेंडेंट उसकी डायरेक्टर बनी, और अब उसको शी इज ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है। ये चौरस्ता चक्रवर्ती भी को भी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला है, और BM बिरला साइंस अवार्ड भी मिला है, एंड शी वर्कड एज ए केमिस्ट्री प्रोफेसर एट IIT दिल्ली। डॉक्टर सुमन सहाय, ये भी इन्होंने अपने जो प्राचीन प्लांट्स हैं इनके ऊपर बहुत रिसर्च की है, नीम, हल्दी वगैरह पर, और वो मानती है कि नेचर्स टेक्नोलॉजी कैन मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हम लोग सभी जानते हैं कि नेचर में इतने बड़े बड़े गुण छुपे हुए हैं, और आजकल कोविड काल में खास तौर से हम लोगों ने देखा कि नेचर की हेल्प से जितना हम लोग उससे स्वस्थ हुए भारतवासी, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा, उसका श्रेय हम लोग केवल इसी को दे सकते हैं। एक सारा सेगर जी, ये इन्होंने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लेकर बहुत सारे 715 नए प्लैनेट्स उन्होंने अपने खोजे हैं, और she has been a remarkable contributor to the modern understanding of space. नीना गुप्ता को हाल ही में अभी इन्होंने जो बहुत दिनों से अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, Zariski cancellation problem for affine स्पेसेस,
शी इज ए मैथमेटिशियन, मतलब एग्जैक्टली स्पीकिंग शी इज ए स्टैटिस्टिशियन, और ये ISI कोलकाता में काम कर रही है। और रिसेंटली इनको 2021 में यंग मैथमेटिशियंस अवार्ड फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री इनको अभी मिला है। और उसका उन्होंने जो फाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा पे काम किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। बहुत रिसेंट लिया है और बहुत यंग स्टैटिस्टिशियन है। अपना जैसे अभी आप लोगों ने बताया था कि DST से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, किरण भी है, और जो विमेन साइंटिस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो भी है। और खास बात इसमें ये है, जो मेरी खुद 2 स्टूडेंट्स को मिल चुका है, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो विमेन साइंटिस्ट जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसमें करियर में गैप होना एक दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवांटेज। तो ये एक बहुत बड़ी बात है DST के लिए, और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे DST डिपार्टमेंट को और मैपकॉस को भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि विमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स शुरू की है और जिनका फायदा सब उठा रहे हैं। मेरे खुद के 2 स्कॉलर्स को ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की, बहुत अच्छे उनकी पब्लिकेशंस भी हैं। तो अपना पर्पज ही है कि महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी उनकी शादी होती है या डिलीवरी वगैरह होती है तो थोड़ा सा उनकी करियर में गैप आ जाता है। और समाज के लिए सभी चीजें बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो माँ का भी रोल है वो भी स्त्रियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। इसीलिए ये जो स्कीम शुरू की है ये बहुत ही इनोवेटिव स्कीम से बहुत सोच समझ कर शुरू की गई है। इसके लिए मैं सभी DST विभाग को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल कहते हैं कि नारी तुम अबला नहीं आज, अब तो ये बात पुरानी है, सबलापन तुमने दिखलाया, अब यही नई कहानी है। तो हम इस नई कहानी को उसके उत्कर्ष तक पहुंचाएं, ये आप सभी के साथ हम लोग जरूर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम डॉक्टर रेणु जैन मैडम। आपने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। आपने पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने, जिन महिलाओं ने भारत का नाम ऊंचा किया है उनका आपने यहाँ पर लिस्टिंग की, और आपने बताया कि किन किन क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी महिलाएं काफी अग्रणी रही हैं। मैडम, ये स्टेम एक जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको यदि हम देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पर हमारे यहाँ काफी जेंडर की प्रॉब्लम, मतलब है कि पार्टिसिपेशन वुमेन का रिलेटिवली स्टेम में काफी कम है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाइस किरण प्रोग्राम इनिशिएट किया था। उसमें मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने भी कुछ अपना सहयोग प्रदान किया है, और कुछ विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड विमेन एंड STI एंड NCT फॉर वुमेन में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मनीषा जोशी, जो इस पर्टिकुलर इस मंथ के विज्ञान उत्सव थीम की कोऑर्डिनेटर हैं और हेड है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस लैबोरेटरी की, डॉक्टर मनीषा जोशी, आप अपना कृपया बोर्ड। स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? स्लाइड विजिबल है मैडम? हेलो विकास शिंदे जी, क्या स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? विमेन फर्स्ट वाली स्लाइड दिख रही है? जी जी ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर मनीषा जोशी, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिवीजन में काम कर रही हूँ, रिमोट सेंसिंग के MPCST में। थोड़ा सी ग्लिम्सेस देना चाहूंगी कि काउंसिल SMT फॉर विमेन एंड विमेन फॉर SMT के लिए क्या काम कर रही है। Council is trying to increase participation of women in scientific program and develop scientific aptitude in all categories of women, self-employment and development of skill through the training program, seminar, workshop, camps, training program, etc. Some research and projects demonstrated technology and finally financially also supported. Some major works which are carried out by the MPCST for empowering the women are: 1. This is a program of DST
in which we have organized a training on microorganisms just to let us learn and observe and microorganisms which are present in our environment. They may be harmful and they may be useful for us. This training was imparted in science teachers, and this project was sponsored by DSC itself, and they have provided a very good science kit to distribute among these participants. These kits were developed by Cotton College, Guwahati. Next, please. MPCST is also organizing Mission Excellence Program to promote the scientific temper among the students of MP, and 40% seats are reserved for girl students, which is as per the government MPCST Madhya Pradesh government rules. Next, please. Then MPCST also providing training on vermicompost, greenhouse maintenance, biodiversity conservation, next please, and other advanced technology of biotechnology advanced trainings for girl students. And one of our fellow from this, Pooja Pandey Dubey, she has developed her own startup in Indore, and she's doing very nicely in this. She will present herself in the second half of this program. Next, please. See, next, please. And apart from these trainings and all, we are also organizing some awareness programs such as reducing malnutrition in women using the scientific approach. For this, we request some experts to share their knowledge with the women. Next, please. And this type of programs are also we are doing, empowering mothers for teaching mathematics at home. Next, please. Council also organizes women science congresses on different topics. This is integrated management and conservation of natural resources for prosperous and power Madhya Pradesh. Another one, next please. In government Madhav Science College, Ujjain. The topic was role of women in sustainable development of Madhya Pradesh. Next, please. One more in Holgate Science College, Indore, skill development, and so on. Apart from this, they are also organizing some programs for the health and sanitation. With various NGOs. This is one NGO, Priyanshi Educational, Cultural and Social Society, Bhopal. The Shalini Saxena Madam is the director of this NGO. She will also present her success story in this. In this program, they are training village women to how to make sanitary napkins and how to use it. So the village women are using it also, as well as they are preparing and selling in their villages also. Thank you. Next, please. Apart from this, MPCST has developed so many cluster programs because to uniting the women at village level is also a great task. So this is promotion for eco-friendly technology, paper matching program. In this, this was 3 months integrated program for designing, and 32 prototypes were women were trained for 32 prototypes, and many women were developed their technical skills, and now they are spreading it in their villages. Next, please. Next, please. And then in our tribal districts, some very good food items are there. So food processing clusters were also developed so that they can use their indigenous food products and then process and then market them. Please. And this is awareness program for unconventional energy. Solar equipments and advanced machines were provided for village women to make their life easier and to make their products in good quality. Next, please. This is the standardization of traditional product, how they have to give the marks so that they can be uploaded in the market. Next, please. This is smokeless advanced chula. Though our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have provided Ujjwala Yojana and they are providing gas in the village also, but still there are some reasons, and because of certain reasons, some people cannot afford, then they can use this smokeless advanced solar. This will not only make them healthy, it will not create pollution, as well as it will decrease the fuel wood also, use of fuel wood.
Next, please. And this is cluster development for potters. The women who were earlier making surai and matka only, now they are making some decorative items also and placing in the market. Next, please. This is apart from this, some other programs just to eco-friendly product. How to make eco-friendly product with the school children. So we are imparting the training from the childhood itself, so they can generate this. We can sow the seed of this type of information, eco-friendly and scientific temperament in our girl child. Next, please. This is another cluster for bamboo, in which also we have provided advanced instruments and technology with the help of IITs to the rural people, particularly in the Hoshangabad district. Indian Grain Storage Management Research Institute, Hapur, gave this training with the help of MPCST to women, tribal women, and they are preparing this moisture, insect, and rodent-free grain store. And the women are trained in this particular technology, and they are replicating and selling in their villages. Next, please. This is the common facility center. Of course, the indigenous products, food products are available there, manner food products which are of no use, but they are very important for health. They have very nutritional value. So MPCST has also developed a common facility center, so the local people of that area can bring their items and they can prepare whatever they want to, and they can make it dabba packed food items. Next, please. Apart from this clustering, council has also worked for the networking, how to prepare the things and how to link it with market and so on. Thank you, please. Next. That's all. And apart from it, council has also developed clusters, sub-clusters, and at village level, so that they can bring their products in the market, and also providing platforms such as Women Scientists of Science Congress and Master Trainer trainings, etc., to strengthening these systems. Thank you so much. I especially thank Lalit, my team, Edisa, for providing me this facility, this opportunity. Thank you so much. Thank you, Dr. Manisha Joshi. You have given very important information regarding the intervention which is being done by MP Council of Science and Technology, especially in the field of S&T for women. And we have seen that we have provided a lot of input from science and technology to empower women, and also the women who are involved in S&T doing activities. We are committed to energize especially the women's sector and to address the issues related to women in the entire state of Madhya Pradesh. Thank you, madam. Thank you very much. We have with us a very important guest, Professor Neil Kamal Kapoor, who is presently Professor and Head of the Department of Pathology and Lab Medicine at All India Institute of Medical Sciences. And she has, you might have seen in Dainik Bhaskar earlier, she used to bring out a column especially related to the women-related issues and also related to the pathology. And we are continuously seeing that kind of activities which are being done by Professor Neelam Kapoor, madam. Neel Kamal Kapoor, madam. I'm sorry, her name has been very wrongly written in our program which we circulated. She is Professor Neel Kamal Kapoor. May I request Madam Neel Kamal Kapoor to kindly address the gathering of this particular occasion. मैडम नील कमल कपूर मैडम है क्या? है क्या, देखो यहाँ मैडम कपूर है क्या? जी, we welcome you.
We welcome you, madam, and we are really thankful to you for sparing your time. And you are having some meeting at 10:30, and that continued till. Yes, yes. Sorry, I got disconnected just while I was trying to connect. Thank you very much, MP Council of Science and Technology, and all the organizing team for giving me an opportunity to talk to you all for 10 minutes about a very important, pertinent and relevant issue of women in science and technology. When I got this kind invitation from council and especially Manisha ji, I started thinking that about what I can talk about in this matter, because there are it's not only the issue of science and technology per se, but there are so many psychosocial elements of community, society attached to this matter, and how much we can discuss about this and what action points should be there. So I structured my small talk on these things only. Please wait for a moment. I would like to share my screen because I wasn't able to send it to Manisha ji, send my presentation to Manisha ji. Yeah. Full screen करें. Video play. थोड़ी देर रुको. Okay, so as I was saying that we are today here to discuss about women in science and technology, and I think science and technology should be an all-encompassing term, which includes anything to do and everything to do with the all varieties of sciences. Because at my age, I am so surprised now that science is invaded or come out of the silo of just being science, because psychology also uses elements of science, even sociology uses elements of science. So now the old times when it was thought that there were silos for science and arts and things like that, it is no more like that. So there were certain elements where women were already present in the beginning. Pure science and technology, yes, the number was less. So let us see a little bit about all that. As it is so obvious, just US Bureau of Labor Statistics of 2020, in the biological sciences, the volume of women is high. That is about 48-50%. Then chemistry and material science comes, computer and maths. In 2020, US Bureau of Labor says that it is 25%. But I think India, if not matches it, then there would be a significant number of women in computers, especially mathematical sciences. I don't know. I could not find a very good data about it. And also engineers and architects formed 16% of their volume.
So the idea is that when we discuss all these things, to bring these numbers to a more higher reasonable level, that is, the population of the world is approximately 50% women. I'm talking in very gross approximations. And if they are 50%, then in all branches, the figure should not be 16 and 25, but much more, like it is appearing in the biological sciences. The involvement of women in science and technology is essential. Now, why do we say that? एक कहावत या जुमला बोलते हैं कि औरतों का भी आधा आसमान है. तो ये जो आधा आसमान है, अगर इससे हमें वसूली करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, तो उस आधे आसमान में भी हमें विज्ञान का प्रसार करना पड़ेगा. सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन is essential. And one more thing, at a more logical and rational point of view, is that women bring different strengths and limitations to science, which is, we all understand that there are various things which a woman can do in a much more proficient and better way than a man. And that is not because that, I mean, it's not about good or bad or, it is about the way nature has made us. The nature, besides giving gross physical equal qualities of like having one nose and two eyes and 2 ears and, also has given a good, very robust CPU, but that is our brain, and which is immediate self-programmable CPU. And this immediate self-programmable CPU is a little differently wired in men and women, which is again well proven and well known. And this quality can be utilized in a composite workplace of science and technology. So there are strengths of women, there are strengths of men, and there are limitations of women and there are limitations of men in the thought process. In, let us say, the volume of empathy and compassion is more in women. The element of physicality is more in men, but they both can be utilized and used in the field of science and technology. So if we put all this in a nutshell, then it is so obvious that a more diverse workforce, which reflects a wider variety of experiences and views, can greatly benefit the science and technology enterprises, as well as make science socially adapted. I could catch a part of the previous presentation, and I was thinking that how beautifully this dictum can be proven over there, because by helping women to understand the processes of things and then commercializing them, they have utilized the skills and the training for a very, very important social cause of upliftment of women and consequently their families. And the families constitute of men as well, besides maybe in a rural setup, even I would say cattle are also family. So when we discuss such things, when we discuss the science and technology issue, prior to that, one thing must come to our mind, that the distinction between men and women should also be thought about. So step one in such a discussion is to stop recognizing everyone or putting in slots everyone as men, women, trans, LGBT, blah, blah, blah. Because all of us are human beings. And if that element or if that thought is put up in our minds as in the whole population, which includes the general people, the policy makers and the executors, then things become easy. Because if the recognition is truly there, then the human rights and principles of equality are applicable to all uniformly, and all individual qualities would be
recognized in all human beings, and a good leader, a good policy maker can utilize them at appropriate desks and places. The step 2, as I said, is to recognize the unique qualities and consequently slotted in their roles. So let us, for example, see if a man has more physical strength, then so many worldly things can be achieved by him. But same, if not more, such strength is in childbearing and child rearing. Hence, it is just a question of acknowledging this uniqueness and slotting it at appropriate places. So if you have a lady worker in science and technology, then as a policy matter, you have to take in consideration the maternal and child issues, because that is as important a task. Bearing and rearing a child is as important a task as working and creating some revolutionary product in the laboratory, or working in my scenario, in a hospital. So it is just that nobody thought about it. And once this thought process has occurred, we see the enhancement of maternity leave, we see the paternity leave concept, we see child care leave concept. And I hope that someday, in very near future, all these attributes would be recognized. This slide is in the sense very interesting, because it's you search for images in Google and you find that these are the kinds of, for women are thrown up, that she's working in a kitchen, happy and waiting for the family to come and enjoy the things. But if you really, it kind of tries to indicate that women don't have a scientific temper, or they enjoy working in these areas, but they don't, enjoy going out and working and picking up science and technology as a subject, or as an occupation. But if you see that, just for example, don't you think the kitchen is a day-to-day science laboratory? So what if these women do not handle autoclaves? They use pressure cookers every day, maybe 10 times, or maybe at least, if not 10 times, then 5-7 times. It's more or less the same principle, and they understand and how to use it. There are pressure cooker accidents, but I'm very sure if you compare them statistically, they would not come out to be significant vis-a-vis autoclave accidents which we have in the labs. Since time immemorial, women in the kitchen knew which two things can be mixed, maybe cleaning solution, maybe food items. They knew that the sour things do not, the brass basic utensils should not be utilized for storing sour things, etc., etc. It is just that the scientific reasoning came out later, but they knew it and they used this knowledge. They also knew their microbiology very well. They did not have any degree in it, but they knew that how can you pickle things, how can you preserve things, how can you make chutney, how can you keep it there, and they knew it thousands of years before. If you go into the ancient history literature, and you will find that in many digs, the remnants of these kind of things have been found in the broken pots and pans of many years back in Mesopotamia, and even in some Indian digs, besides the grains and all. So food processing as a science came much later into picture, but how the native knowledge, which I would say the women knew because they were labeled with managing the kitchen, it was all organized into a science. The women also knew the benefits and usefulness of fermentation, utilization of various forms of heat, from open flame to steaming, etc., etc. So yes, they did not have a degree in science, a label on their foreheads of being a scientist or something like that, but they were scientists in their own accord. However, the society turned towards patriarchy, and the patriarchal society, because they could acquire degrees and they could live away from home, learn various major things. In Europe, Renaissance occurred. Various universities were
formed. So that patriarchy, it started calling the women not of or not from science. And unfortunately, economic and financial dependence made the women accept this label. They did not at that time protest that we are of and from science. The only thing is that we have not gone to any university to pick up a degree. So the question of women not having a scientific temper is, I think, resolved. So, but bringing this fact to theory and to some extent in practice makes its limits more apparent. In any traditional society, the matter of women, I mean, if we just look at the causes, it comes up against a man's or the whole community's or family's resistance to a more equal sharing of domestic chores. The domestic chores are kind of brushed under the carpet. अरे क्या कुछ नहीं करते हैं, घर का काम करते हैं, ये even women say like that. But I am a professional working woman, and I've been working for almost 4 decades now. This is my 40th year of joining service, and I am a housewife as well. And of course, I do some writing. But let me tell you, the domestic chores are the most calm in my life. The rest of things are much more organized, and they can be organized because variables are much less. In my workplace, I am constant. When I'm writing, I am constant. But when I'm at home, I or any lady, she is the only constant, and rest of the family members are variables. So someone would want this at this time, someone else would want the same thing made in another way at another time, and so on and so forth. Women are, I don't have to elaborate with women, and men, I think, men as erudite as this August gathering would definitely be understanding this. Otherwise, we won't be having this program. So this resistance and temptation to confine women to their traditional housekeeping roles is particularly strong when the competition for jobs intensifies. If you read essays and write-ups about these issues, at many places you will find an undercurrent of resentment. It is something in the same way when American youth says that we have been Bangalored. So similarly, at certain point, when the job numbers, amounts become less, the first one to be thrown out of the market are women. And during these COVID times, we've again seen this phenomena. Again, it is not only the society or community or men to blame. Somehow, due to conditioning, a process of self-selection too is there. By default, many women somehow lack confidence that they would be able to handle science. The imaginary anticipation of difficulties is there by themselves, and all this, even if they have people encouraging them or at least supporting them to do whatever they think they want to do, they withdraw from the arena of science, which definitely does require a lot of time, lot of hard work, but the self-selection, a negative self-selection, makes women withdraw from it. And the key phases in any professional cycle, like entry into studies, entry into professional life, and evolution throughout the career, are there in anybody's life, in a man's life or a woman's life. But for each of these phases, the personal, family, or professional context may change according to the gender of the subject. And especially fortunately or unfortunately, the most productive years are those years in which a woman has to be dealing with her reproductive needs and support to the family. So what, in a very small nutshell, because this is I think I've already exceeded my time, but 1 or 2 slides more. What can we do? So when I think about that, and when I read a few surveys and essays also, I realized that
And then I look back on my life, I realized that while I was a school-going child, my parents were well motivated to send me into science if I showed the inclination. So it was no compulsion, but when I showed inclination into science, I was further motivated. So counseling and motivation of parents of school-going girls is very important, because girls or women by temperament are family-oriented people. They have a strong natural link to their parents, which is natural. So if the parents are well counseled, well motivated, they inadvertently transmit this thought to the child, to the girl child. And girl child, if she has an inclination, if she has a bent of mind towards science, is definitely going to pick or at least experiment with science in the initial phases. When students, pupils choose their subject orientation, then in the schools also, nowadays in good school, there are counselors and all those things. So interactions and discussions should be designed in such a way that both gender children are aware of how to approach life. And once they are aware of how to approach life, and at an individual level, they know how they want to approach their life, perhaps they can find balance between science and technology and there are other things which they wish to do. At the institutional levels, again, the government has worked a lot. There is a conscious financial support for various projects, conclaves, surveys related to women in science and technology. We are participant of one, which is great. But perhaps all this has to be, increased a little more, in the sense that some mentoring and ideation support is also required. Once those mentors can create a pool of women in science and technology who can further spread the mentoring, the circle would become much wider. Then popularization of female role models in the science, drawing on different backgrounds, academics and engineers, young and not so young, occupying high rank or more ordinary positions, mothers, single women, so that girls can identify with them, because role modeling at an impressionable age is a very, very important tool. And as I saw in Dr. Jain's lecture, that she had beautifully illustrated about all the strong women in Indian science and technology arena. So these are just few stray thoughts and ideas, but I'm very sure if we have a conclave about this, we will come out with maybe many more and much more innovative things. So I would like to end with a quote from Melinda Gates, that a woman with a voice is by definition a strong woman. Everyone would agree to that. But the search to find that voice can be remarkably difficult. And when we are sitting here and talking here, I see a few women on my screen, which I believe must be the lady scientist. Some I can't see. But as I always say, me or them, we are actually, honestly, not true representatives of Indian women. There are lakhs and crores of such women who are extremely talented, perhaps much better than me. It is just that I got a better opportunity through my parents, through my teachers, through my colleagues to come up to this level, but they did not get. So this is for me and for my colleagues, ladies whom I can see on the screen and not on the screen, that we also have to work very hard to search, to find that voice in those women who still are voiceless. So thank you for giving me this opportunity and this window for meeting and talking with you all. Thank you very much. And again, I'm grateful to MP Council of Science and Technology, Manisha ji and other organizers for having me here. Thank you very much, madam. We are really always delighted listening to you. And as you have very rightly said that
instead of calling men, women, trans, or any other category, we should address them by human being. That is very true, and you might be knowing the science, technology, innovation policy at the national level has been drafted, and that is available on the DST website for comments. And in that entire chapter has been dedicated for equity and inclusion, where women component has been addressed in a very scientific manner, and lot many programs have been conceived and are being implemented by Department of Science and Technology, where S&T can provide some kind of intervention in the life cycle of women, and also the women scientists who can contribute toward the science and technology of the country. So both ways these activities are going on. We are extremely delighted and we are extremely thankful to you, madam, to listen to you always. And but for the last few years, we are not seeing your column in Bhaskar. Okay. Thank you very much. We have with us another special guest. She is Executive Director at Center for Entrepreneurship Development of Madhya Pradesh, Madam Anuradha Singhai. She has also joined with us in this program as a special guest. We request Madam Singhai to kindly address the gathering. Very good afternoon to all of you, and thank you so much for giving me this chance. All the speakers before me spoke so well, and they covered almost all the topics and everything. But there are few things which I would like to share. Actually, in this topic, there are two subtopics. One is the role of women in S&T, science and technology, and other one is the science and technology for women. So if we talk about the first one, that is the role of women in science, reason being she has stepped in almost all types of activities, whether it be household or the working periphery. So she understands the problem, and when she herself understands the problem, she can very well give the solutions also. So someone has very aptly said कि औरत होना यूं भी आसान नहीं, बनकर सूरज निकलना पड़ता है चाहे लाख अंधेरा हो. So since she has to spread light to others, she feels the pain of other people, she can definitely bring very practical solutions in science and technology for other females, whether it be working women or it be the home managers. Now, coming to another thing, that is the science and technology for women. So what should be the objective of science and technology for women? Where do we need it? And of course, the DST is already doing a lot in that area. I personally feel that the main objective of science and technology for women should be to reduce the drudgery and the problems, whether it be for the working woman or for the home managers, whether it be for the rural area or for the urban area, may it be for the upper class, middle class, or for the lower income strata. Because every type of class and every geographical segment has its own set of problems which are very female specific problems. Or you can say that in day-to-day affair, she's facing all those problems. And it becomes quite cumbersome for her to manage those things. So if we can come up with the technologies, which are maybe small technologies, some low-cost technologies, labor-saving technologies, but if we can bring the technologies, which I mean, a lot of innovations, lot of inventions are daily going on to bring up such technologies in agriculture sector, in other rural technologies. I mean, that is going to reduce the drudgery, reduce the problems for female a lot. And once her life becomes comfortable with day-to-day course, either household course or the official work or the work area in which she is working, may it be agriculture or handicraft or even the textile or anything. So the quality improves, and our basic motto of gender equality comes true. So I would like to give few suggestions, and I would like to offer from SEDMAP that we can help in selling those low-cost technologies prepared by the women entrepreneurs or for those women
the technologies which are basically made for those women. So we can help in entrepreneurship development, we can help in selling of those technologies. We can also come up with hackathons, startup activities wherein we can define the problem statements. We can list out the problems which a female, a working woman, or a homemaker uh, in every area, rural, urban, and in all income strata group are facing. And we can come up with the solutions. I mean, the startups can come up with the solutions. We can have such hackathon. And those startups, those technology driven startups, these technologies which are specifically for women, women friendly technologies, can be promoted, can be supported by different investors, mentors. And SEDMAP is going to extend all the help in terms of mentorship, in terms of startup promotion. So we are here for that in terms of science and technology promotion for women, especially. So that's all from my side. I won't take too much of time. And once again, thank you very much, MPCST team, for giving me this time and chance to interact with you. Thank you so much. Thank you very much, Madam. And you said that SEDMAP is also doing certain programs, especially for women component, and addressing their issues and to provide them entrepreneurship development and also to market linkages and all that. We are extremely thankful to you to be part of this program. As you have said, that MP Council of Science and Technology has organized, organizing various programs throughout the year for various sectors of the society. Like there is one program which we call it as Madhya Pradesh Young Scientist Congress, which is being organized every year on National Science Day in February. And some of the persons who have been awarded by selecting as the best research paper award, they have been requested to say something related to what exactly has been given, some kind of input from science and technology, this thing from MP Council of Science and Technology. So we have, and apart from that, we organize continuously training programs in biotechnology, in handling of the sophisticated instruments available at MP Council of Science and Technology. And they start their laboratories and they equip themselves with the latest technologies which are there in the market. So we have identified a few of them, like Dr. Pooja Dubey Pandey, who is founder and managing director of Beti Innovative Private Limited Indore. She was supported by us in one or the other way. And then we have Professor Kamini Jain. She is presently Principal Government Home Science PG College, Hoshangabad. And Mrs. Shalini Saxena, who is presently Director of the Priyansi Educational, Cultural and Social Society, Bhopal. So these three women have been requested to share their experiences regarding the success stories. May I request Dr. Pooja Dubey Pandey to kindly say a few things. I would request her to kindly restrict for 5 minutes if you could be able to restrict. Dr. Pooja Dubey Pandey. Yes, sir. Thank you very much, sir. Very good afternoon to all the respected dignitaries, eminent scientists, honorable guest speakers, and respected audience. It is really a great pleasure today. Am I audible, sir? To all of you? You are audible. Okay, thank you, thank you. So it is a great pleasure today here to have this opportunity, especially to thank Madhya Pradesh Council of Science and Technology because I have been supported by many ways from MPCST. I have been here today because of MPCST. I was awarded MPCST award in 2014. And because of my PhD guide, I would like to thank him also. And most of the eminent scientists present, respected director sir, ex-director sirs, and Dr. Anita ma'am, Dr. Manoj sir, they all have always been a great support for me. Therefore, because of MPCST, I got the fellowships also. And I was able to join National Institute of Virology, one of the eminent institute in research in virology. As I had worked on viruses, my PhD was on viruses, and I got the opportunity to work in NIV under the scheme FTYS. I got the fellowship, and then during that tenure, I got the job as a senior technical specialist in Tata Cancer Hospital,
although there are many awards which I received during my career, but this specific award by MPCST has added a golden feather to my career, and I got many new opportunities. I have been the faculty in eminent colleges and prestigious colleges of Indore and Bhopal. And when I joined ACTREC at that time, ACTREC is the Cancer Research Institute of Tata Memorial Center. At that time, I felt that when I was working on cancer, I felt that what I am doing here, because we are working on a very high grade technology. They are working on various treatments of cancer. But when I was there during that tenure, I felt that what are the basic reasons, what are the basic causes which are leading to these major issues in our world and in India. So I found that basically malnutrition and pollution are the two basic problems of our world, which is leading to all these problems, leading to cancer, many types of diseases. So I thought of working on ground level, working on implementing my knowledge, my experiences, whatever I have gained during my life, and to work on malnutrition and pollution. So may I have the permission to share the screen, ma'am? Is my screen visible? Yes, yes, your PowerPoint is visible. Okay, okay, thank you, sir. It's coming full screen. Now it has gone. So when now it's not visible. it was visible, but now it has gone. Yes, now it is visible. Okay, so when I came back, I thought of leaving the job and come back and start something of my own, with my own experiences, with my own learnings, what I have gained from my life during my learnings. So I thought of starting something from very basics, which can be transformed from lab to land scale. So here I gave birth to my institute, Beti. Beti stands for Biotech Era Transforming India. It is also my younger Beti after my elder daughter. And then when I was working in this idea, I was thinking that malnutrition and pollution can be solved at a lower budget, lower scale. What could be the better option for this? What should I start with? Then I came reminded in my mind it came about the things whatever I had learned during my studies, during my masters, during my PhDs, SCPs specifically, and that too specifically mushrooms. So mushrooms came up with the idea to solve the basic problems of malnutrition and pollution. But when I started looking forward to enter in this field and start something of my own, I found that there are many we are lacking behind in this field. There is a lot of work to be done in this industry. So being a biotechnologist, I thought of starting my own spawn production laboratory, because this was the first requirement in this field. So now in 2019, it is DPIIT certified Beti Innovative Private Limited Company. As you can see on the screen, the certification number and all. So I came up with the vision of upscaling traditions scientifically, and with the mission to eradicate malnutrition and pollution from our country as well as the whole world. So this is the mission and vision of Beti. And what we do at Beti, we try to make the best quality of spawn. Although I started from my home, because at the early phase we are not very sound to start some entrepreneurship financially. What could be done? So my father-in-law was a great support for me. He little bit helped me out during my entrepreneurship financially also. So I started spawn production laboratory, and we try to make the best quality of spawn by through tissue culture, whatever experiences I have gained during my academics and research journey. And basically we focus on waste to wealth, sir and ma'am, because when we talk about mushroom, I told that malnutrition, pollution can be targeted. Both the problems can be solved. Although when we talk about mushrooms, we say that from one solution we are targeting n number of problems.
So here we are basically targeting waste to wealth, because mushrooms are basically grown on agri waste. And when I was working on spawn production standardization in the laboratory, I found that people don't know how to cultivate mushrooms basically. So I also started providing dissertations to research students, those who want to do research work in the laboratory. And also I started providing mushroom cultivation training. While working in this field, I got some prestigious awards also, and Rajya Sabha team also came to cover our story, and various other news papers published our story. So this way I converted my house ground floor into a laboratory, and also to standardize and to find the quality of the spawn, we started also mushroom production. This is my daughter Ira, on whose name I have made this, developed this institute, Biotech Era Transforming India. And this, you can see that these are the indigenous varieties oyster mushrooms, which can be grown very easily at a very low budget, low scale. This was the reason basically that everybody can grow mushroom in their house, and these are very healthy and superfoods, immunity boosting food, being looking beautiful also. So these are some of the packaging. So you see, you can see that the packaging which is done of for mushroom packing, we are generally using thermocol. When we say that when we are working on a solution of one problem, we find another problem. When we find another problem, we have to work for another solution. So in the meanwhile, when I was working on this all things for malnutrition, pollution, I found that this thermocol packaging is a very major issue. We are saying that we are working to eradicate malnutrition and pollution, but here this thermocol packaging was creating a lot of pollution. This is very carcinogenic, being made from styrofoam. So it is a cancer causing agent. So this was the reason I started working on an idea of biodegradable packaging materials also. These are the dry mushrooms you can see on the screen. These are our products which we launched during this our journey of entrepreneurship. This is the mushroom powder, which are sun exposed, containing vitamin D and protein. It is a superfood. During the time of COVID lockdown, government was continuously promoting mushrooms as a immunity boosting superfoods. So we got many people got to know about the benefits of mushroom, and this was a product developed which is a very good alternative of Maggi masala. You must say it tastes like Maggi masala, but it contains basically mushroom powder and moringa powder and all the herbs and spices which were recommended by Ministry of Ayush during the COVID times. So this is a complete solution for superfood. Those kids, those who are habitual of having Maggi, as it is having mushrooms are having umami flavor, and this is a very scientifically designed product having the basic concepts of vitamin D absorption along with the olive oil and other because it is a vitamin D, because vitamin D is a fat soluble vitamin. And you can see here in this screen that this was the product which I was talking about, that when I was working on the packaging of mushrooms. So I came up with some solutions like from the agri waste we are growing mushrooms, and when mushrooms are grown, whatever waste is left, like mycelium packaging and waste packaging, we developed two technologies, either directly from the mycelium of mushrooms we developed the packaging, and the waste after harvesting mushrooms, whatever bags are left, the remains, we call it spent mushroom substrate. We use that kind of waste to make these kind of biodegradable articles, trays, and you can see these all products. These are very beautiful products and in the huge demand. Although what happened when we were working, we were able to develop these prototype stage, and when we were working in the meanwhile, we got the grant from government, central government, from IARI PUSA of 5 lakh. They found our idea very interesting, and they said that you work on the technology to develop a machine which can lead to the like whatever demand is there in the market. So we are currently working on the idea of commercialization of this technology so that we can meet the demand which is huge demand is there in the market nowadays of to replace the thermocol and all the plastic materials. So we came up with these different type of articles, because when we were in lockdown, we were not able to work on many things. So always we wanted to innovate something new and
reinvent our wheels, because every entrepreneurship has to survive anyway in any condition. So this way we came up with all these products during this lockdown period, as you can see on the screen. So these are in huge one, and this is some of the glimpses of the prestigious awards which we received during our entrepreneurship journey, and it was really very pleasing. And I must say thank to MPCST, because of that only I was because of that specific award, my journey became so nice, and I got so many inspirations and motivations from MPCST. Thanks a lot. Thank you, Dr. Pooja. You have very nicely explained how you initiated your effort, and it was converted into professional this thing. And you are earning also, it has been learned. And that is very good, that right starting from seeking training to development of your entrepreneurship, and also doing it to the market level. It is really a very nice effort. We congratulate from MP Council of Science and Technology and wish that we will further grow, and you will be there in Madhya Pradesh as one of the lightning star in Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you very much, sir. I would like to have further future support also from MPCST to keep on guiding me further for technological inventions and implementation at a commercial scale of these all products. Yes, MP Council of Science and Technology is committed to provide all sort of facility input for betterment of the society and also for development of Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Professor Kamini Jain, who is Principal, Government Home Science PG College, Hoshangabad. May I request Madam Jain to kindly say it. I would request that if you could be able to receive for 5 minutes, it will be good, because we are quite overshooting the time. Please. Thank you, sir. Thank you so much. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जैन, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पट्टा, प्रोफेसर कपूर, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर अनिल कोठारी जी और सीनियर साइंटिस्ट मनीषा मैम का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे सक्सेस स्टोरी ऑफ वुमेन सपोर्टेड बाय एमपीसीएसटी के बारे में बोलना था, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि एमपीसीएसटी के साथ शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर अग्नि महाविद्यालय होशंगाबाद लगभग 12 सालों से काम करता आ रहा है, और मैं बहुत आभारी हूँ मैपकॉस्ट की कि उन्होंने महाविद्यालय को, चाहे वो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस हो या विज्ञान दिवस हो, लघु शोध परियोजना हो, हमेशा वित्त पोषित किया, जिसके कारण, क्योंकि हमारा महाविद्यालय, सर मैं बताना चाहूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का लीड कॉलेज है और लगभग 29 महाविद्यालयों को हमारा कॉलेज लीड करता है। मैपकास्ट की परियोजनाओं का लाभ हमने 29 महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हम दे पाए हैं। हमारा जिला ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ है और हमारे महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 5,500 बच्चियां हैं जो अध्ययनरत हैं, और 80% हमारे स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं। तो आपके प्रोग्रामों के कारण हम अपने बच्चों में बहुत सारी जागरूकताएं फैला पाए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी सर कि जिले में स्वास्थ्य पोषण संबंधी अज्ञानता, अस्वच्छता, प्रदूषण, सौर ऊर्जा, युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए इनके उन्मूलन हेतु समय पर विभिन्न हमारे परियोजना प्रस्ताव तैयार किए गए, जिनके क्रियान्वयन में महाविद्यालय की छात्राएं, स्थानीय जन समुदाय, महिला बाल विकास, समाज सेविकाओं, मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया। परियोजनाओं की सार्थकता का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, जिसके हमें सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए। सर 5 मिनट का समय मुझे दिया गया है, तो मैं महाविद्यालय में जो हमारे विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं मैपकास्ट के द्वारा, जिससे लगातार विद्यार्थी और जन समुदाय, विशेषकर महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मैपकास्ट
ने हमें मशरूम परियोजना के लिए वित्त पोषित किया था, जिसके कारण हमारे महाविद्यालय में परमानेंट स्ट्रक्चर मशरूम उत्पादन के लिए है। 14-15 से हम लोग सतत मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। लगभग 200 से 250 महिलाएं और हमारे विद्यार्थी प्रतिवर्ष मशरूम का प्रशिक्षण लेते हैं। सूखा मशरूम, मशरूम पाउडर और फ्रेश मशरूम महाविद्यालय से सेल किया जाता है। और विद्यार्थियों को सोलर, हमारे पास सर हम लोगों ने आपके मदद से सोलर ड्रायर भी लिया था, इसकी मदद से जो पाउडर बनता है उसे हम बाहर भी सेल आउट, वैद्य जो होते हैं उनमें हमारा सेल आउट भी हो रहा है। सर हम एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और होम साइंस डिपार्टमेंट भी है। तो मशरूम से वैल्यू एडिशन करके लगभग 50 हमारे रेसिपीज तैयार किए गए, जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निकाली गई और उस पुस्तिका का जन साधारण में प्रसार किया गया। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जो है, जिसमें हमारी सक्सेस स्टोरियां भी है मशरूम उत्पादन में, हमारी श्रीमती वसु चौधरी हैं, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी। सर उन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके, सरकार से अनुदान प्राप्त करके बहुत बढ़िया लघु उद्योग मशरूम का खोला है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में वसु चौधरी का नाम है। दूसरा सर हमारे यहाँ जो मधुमक्खी पालन हमने किया था, सर मधुमक्खी पालन में श्रीमती कविता राजपूत हैं, जिन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया और शाहगंज होशंगाबाद के पास में ही है, वहां पर ये अपनी मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन कर रही हैं और आसपास के क्षेत्रों में शहद का विक्रय इनके द्वारा किया जा रहा है। सर महाविद्यालय में भी अभी भी सर आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी भी हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें मधुमक्खी पालन प्रतिवर्ष हम सतत कर रहे हैं। अभी भी 4 स्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध हैं। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रोजेक्ट के रूप में, मशरूम पालन प्रोजेक्ट के रूप में भी हमारी बच्चियां ले रही हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। सर मैं एक बार फिर आभार इसलिए प्रकट करना चाहूंगी कि जो वित्त पोषित हमें किया जाता है उससे हम लोग प्रसार सामग्री भी बना लेते हैं और सतत उसका हम लोग वितरण जन समुदाय में, महिला बाल विकास में और जो हमारे एनजीओज हैं उनमें हम बराबर करते रहते हैं। सर लास्ट प्रोजेक्ट जो है, जो महाविद्यालय में वर्मी कंपोस्टिंग है, सर जैविक खाद के लिए भी महाविद्यालय को वित्त पोषित किया गया था। परमानेंट स्ट्रक्चर महाविद्यालय में है। सर महाविद्यालय के जो हमारा सर गार्डन वेस्ट निकलता है उसका उपयोग करके केंचुआ खाद बनाया जा रहा है। बायोगैस संयंत्र भी मैपकास के सौजन्य से महाविद्यालय में है और चूंकि छात्रावास हमारे कैंपस में ही है, तो जो किचन वेस्ट निकलता है सर उससे बायोगैस बनाया जाता है और लैब जो हमारी क्लिनिकल न्यूट्रिशन और होम साइंस की लैब है, उस फ्लैम का इस्तेमाल हम वहां पर कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैपकास्ट के माध्यम से लगातार हम लोग अपने विद्यार्थियों को और अपने जन समुदाय को हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आगे भी हम मैपकास्ट का सहयोग हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा और हम अपने विद्यार्थियों को और जन समुदाय को इसी तरीके से प्रेरित कर पाएंगे। सर चूंकि मैं आपको 2 मिनट और आपके लेना चाहूंगी कि हमारे इधर सोयाबीन बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सोयाबीन की खेती बहुत होती है। तो जो हमारे लोकल खाद्य पदार्थ हैं सर, जैसे यहाँ पर जाम और नींबू, टमाटर, इनकी खेती भी बहुत होती है। तो हम लोगों ने खाद्य परिरक्षण भी कार्यशालाओं का आयोजन किया है और परिरक्षण तकनीक से भी विद्यार्थियों को और जन समुदाय को परिचित कराया है। आदिवासी अंचलों में सर केसला हमारे पास है। आदिवासी क्षेत्रों में हमने वहां पर जो बेर, कबीट और कोदो, कुटकी, रागी जो उनके भोज्य पदार्थ हैं सर, इवन महुआ तक भी हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया और उसके रेसिपीज, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमने वहां पर उसका प्रदर्शन किया सर, और उसके लिए भी बुकलेट बनाकर उस आदिवासी क्षेत्र में भी हमने उसे सर डिस्ट्रीब्यूट किया। और सतत हमारा महिला बाल विकास के साथ कांटेक्ट बना रहता है और उनके माध्यम से हम अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार जो भी हम करते हैं सर, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। कल ही हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और आगे भी राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाने की हम लोग योजनाएं बना रहे हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूं कि आपका सहयोग अगर महाविद्यालय को मिलता रहा तो हम बहुत हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित कर पाएंगे और जन समुदाय को लाभान्वित कर पाएंगे। आप सबका एक बार फिर से बहुत आभार, धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत शॉर्ट में और बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान अपना प्रस्तुत किया। आपका जो प्रेजेंटेशन था उसमें आपने इतनी एक्टिविटीज को बताया कि जिसको इतने कम समय में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आप जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपने कुछ स्लाइड्स यहाँ जो शो की थी, हम लोग अक्सर नर्मदा के अलॉन्ग जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए जो परिषद काम कर रही है, उसमें आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी संस्थाएं कुछ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। हमारे साथ मिसेज शालिनी सक्सेना जो डायरेक्टर है प्रियांशी एजुकेशन कल्चर एंड सोशल सोसाइटी भोपाल की, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना प्रस्तुतिकरण दें। Good noon, everyone. Hi, I'm Dr. Shalini Saxena. I'm the president of Priyanshi Education, Culture and Social Society. First of all, I want to thanks to MPCST and DST for giving me this great opportunity. मैं यहाँ अपना presentation जो है वो sanitary napkin पर दे रही हूँ। हमारी संस्था जो है at present we are working in 4 states of the country: Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, and Arunachal Pradesh. So I requested to Manisha ma'am, please share my PPT, ma'am. Could we share here? Sure. है हाँ सर, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए आप। Yeah, thank you. Successful initiative on health, menstruation, hygiene and sanitation. हमारे बीच में आज हम बात कर रहे हैं साइंस फॉर विमेन एंड विमेन फॉर साइंस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट टुडे आई वांट टू शेयर बिकॉज हमारा जो काम हमने स्टार्ट किया था 2012 to 15, हमने बड़वानी, इट्स अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, और बड़वानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है सेंधवा, वहाँ किया था. और मैं यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ उस जगह पर जो महिलाएं हैं वो इतनी भी अवेयर नहीं थी. दैट टाइम दे वर यूज्ड इन मेंस्ट्रुएशन पीरियड leaves, ash and dirty clothes. So this presentation is very important for all of us. Next slide please. Next please. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल थी. ये हमारा वर्किंग एरिया है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट में हम काम कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. सर ये इसकी पहले वाली स्लाइड सर. सर ये हमारा जो था एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, हमने 12 विलेजेस में हमने काम किया था सेंधवा में, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी में. और हमारा टारगेट ग्रुप था 240 वेमेन थे हमारे, और उसमें गर्ल्स और वेमेन दोनों शामिल थे. और हमारा जो मेन हमारा इंटरवेंशन था वो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन पे था थ्रू हैंडमेड मशीन विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग. ये सर आप फोटो में देख रहे हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटी सी मशीन बनाई थी जिसकी 7 लेयर से डाई हमने बनाई थी. मात्र 200 to 350 तक का इसका कॉस्टिंग आता था. और वहाँ जहाँ जीरो था, जहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, वहाँ हमने इसके साथ काम शुरू किया. इनिशियली हमने बहुत सारे इसमें चैलेंज फेस किए बिकॉज लोगों का कहना था, महिलाओं का कहना था कि हम क्यों यूज करें सैनिटरी नैपकिन, ये क्या होता है. कई बार मशीन्स जो लोग हैं वो अपने चूल्हे में इसको जलाने के लिए भी यूज ले लेते थे, बहुत सारी चीजें. लेकिन एट प्रेजेंट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि राइट नाउ हमारे जो लगभग 8 ग्रुप्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से आज विंग्स वाले पैड जो हैं वो बना रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये हमारा मेजर प्रॉब्लम था, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पुअर हेल्थ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग, malnourishment and anemia, poverty and lack of education, myths and superstitions, lack of resources and alternative income options.
I'm talking about the Sendva. There is awareness level was very low. और जो महिलाएं थी उनके लिए आप पाएंगे जिनके पास भी पूरा हमने रिसर्च किया है, इस पे हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, सिकल सेल एनीमिया वहाँ बहुत ज्यादा था। तो जब हमने सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन की बात करी तो सबसे पहले जो हमने है उनके न्यूट्रिशन पर हमने बात करी, हमने उनको लोकल लेवल पर जो भी फूड अवेलेबल था उस पर वो कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो ड्रम स्टिक का जो पेड़ होता है उसकी जो लीव्स होती हैं, जो ड्रम स्टिक्स होते हैं, उनसे कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा सकते हैं। पहले उनकी हेल्थ को इतना इम्प्रूव किया, उनकी हेल्थ पर बात करी ताकि उनका जो हेजिटेशन है वो हमसे खुल सके। तब हमने उनके साथ सैनिटरी नैपकिन, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मेल पर्सन तो बिल्कुल ही बहुत दूर की चीज है, फीमेल्स भी इस पर बात करने में बहुत हेजिटेट होते थे। और यहाँ हमारे साथ अगर आई थिंक इस प्रेजेंटेशन में बोकेल मैम जुड़े होंगे तो उन्होंने फील्ड विजिट भी किया है हमारे साथ। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी। एक काला पीपल नाम का जो गांव था, वहां की महिलाएं इस बुरी स्थिति में रहती थी कि पीरियड्स टाइम पे अगर वो ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं तो पत्ते यूज करते थे या ऐश यूज करते थे। लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और आज का जो सिनेरियो है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये सर हमारी मेथोडोलॉजी थी कि हमने उनको एंटी नाटाल केयर एंड पोस्ट नाटाल केयर, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ IYCF और RMNCH पर हमने काम किया। ट्रेनिंग ऑन लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन, जब आज से 10 साल 11 साल पहले सैनिटरी नैपकिन का जो पैकेट है वो 25 रुपीज टू 33 रुपीज तक का आ रहा था, तब हमारा जो पैड था मात्र 75 रुपीज से 1 रुपीज का एक पैड हमने बनाया है और गांव-गांव में हमने ऐसे पहुंचाया है इनिशियली कि ताकि फ्री यूज में वो सबसे पहले सेल्फ यूजर बने। क्योंकि जब महिला खुद अपना हेल्थ अच्छी रखेगी तभी वो सोसाइटी को और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकेगी। डेमोन्स्ट्रेशन कम प्रमोशन ऑफ हाउस लेवल किचन गार्डन, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। इतना ज्यादा उनकी कंडीशन खराब थी कि हम उनसे अगर बात करें कि नहीं यू शुड ईट वेरी न्यूट्रिशियस फूड, तो दिस इज नॉट अ राइट वे बिकॉज दे हैवंट एनी सोर्सेज। तो हमने किचन गार्डन लेवल पर हर घर में 7 तरह की अलग अलग सब्जियां लगवाई, उनको 2-2 फ्रूट्स के प्लांट्स दिए ताकि वो बेहतर तरीके से, उनके पास अवेलेबिलिटी होगी तो निश्चित वो खाएंगे। तो हमने दोनों एस्पेक्ट पर काम किया, उनकी हेल्थ पर भी, उनके हाइजीन पर भी हमने काम किया। ट्रेनिंग ऑन CBO एंड SHG एंड डेवलप एंटरप्राइज मॉडल, बिकॉज उनके पास इतना समय नहीं था कि वो सिर्फ सीखने आते और सीख कर बनाते, यूज करते। तो उनके पास सवाल था खाने का। तो हमने इसमें वी आर वेरी ग्रेटफुल टू DST एंड MPCST कि उन लोगों ने इन महिलाओं के लिए स्टाइफंड की भी व्यवस्था रखी, इनको स्टाइफंड दिया। साथ साथ हमने इनके ग्रुप्स बनाते गए कि आप बनाएंगे और कैसे फिर आप इसको मार्केट में सेल करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हुई, ना केवल उनकी हेल्थ में, उनके हाइजीन में काफी इंप्रूवमेंट आया, बल्कि साथ साथ उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स था वो भी हम खड़ा कर पाए। एंड ट्रेनिंग टू ICDS प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग ऑन न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन एंड वॉश। इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज जो वो यूज कर रहे थे उस कपड़े को वो दोबारा से बिना धोए भी यूज कर ले रहे थे, राख जैसी चीज यूज कर रहे थे, तो बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन था। और जब हमने इनिशियली मोटिवेशन का काम स्टार्ट किया था तो मैक्सिमम वेमेन आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेरिया, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज प्रॉब्लम। तो हमें समझ में आया कि ये वजह क्या है। तो हमने उन्हीं की नीड, उन्हीं की जो प्रॉब्लम्स थी उसके बेस पर हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया। और हमें लगा कि जब हम अगर ऐसे जोड़ेंगे कि प्रोडक्शन कम, इनको हम फाइनेंशियल लिंकेज, मार्केट लिंकेज हम दे पाएंगे, तभी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारा जो ग्रुप हमने बनाया, ना केवल उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अपना खड़ा किया, हमने इनको बनाना सिखाया और सबसे पहले बेचने नहीं भेजा, क्योंकि व्यक्ति वो चीज अच्छी बेच पाता है जिसका उसको खुद पता हो कि क्या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन है। तो हमने सबसे पहले इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हीं को बांटना शुरू किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका यूज कीजिए, आप देखिए कि कैसे इससे आपको कितना फायदा होता है। जो 7 डेज आपको पैनिक लगते हैं, आपको लगता है कि कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते, या ये कोई एक कर्स है, तो ये सब ना हो। तो इन्हें जब यूज करना शुरू किया, इनिशियली इनको हेजिटेशन था बात करने में, इनके लिए भी एक नई चीज थी, लेकिन यूज करना और उसके बाद कैसे उसको फेंकना है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है, सारी चीजों के बाद अच्छे रिजल्ट आए।
और आप दूसरे फोटो में देखेंगे ये जामली गांव से हैं हमारी महिला, और ये देवी बाई, इन्होंने जो MPCST मेला लगाता था, विज्ञान मेला, उस मेले में आके इन्होंने अपने सैनिटरी पैड्स बेचे भी, एंड वेरी ग्रेटफुल टू MPCST की इतना अच्छा मौका दिया। और यहाँ सिर्फ इनके पैकेट्स नहीं बिके, लोगों ने इन्हें इतना अप्रिशिएट किया कि हाँ, एक पूरे ग्रुप में एक नई जान आई और फिर से इन्होंने एक बार नई शुरुआत करी। और आप दूसरे फोटो में देखेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा, MPCST की टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, DST की टीम ने सपोर्ट किया, और हमने स्टरलाइजिंग मशीन जो है हमारी रिसर्च एंड डेवलप टीम ने वो बनाई, और हमने फिर उनको स्टरलाइज करना शुरू किया। और ये हमारा काम जो है फिर MP से लेके हमने छत्तीसगढ़ CG कॉस्ट के साथ, APC कॉस्ट के साथ, अरुणाचल प्रदेश तक हमने इस सब्जेक्ट पर काम किया है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ we are talking about sustainability and skill enhancement is very must, because जब हम बात कर रहे थे कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था 2002-03 में, तब हम हैंडमेड मशीन यूज कर रहे थे। उसके बाद 2012 तक वो हमारा बहुत अच्छा सक्सेसफुल हैंडमेड मशीन का रहा, पर उसमें विंग्स नहीं होते थे। पर काम जब भी आप कोई करते हैं तो उसमें जो कम्युनिटी की डिमांड आती है, जो आपकी मार्केट में डिमांड चल रही होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें एक चीज निकल कर आई, DST के एक प्रेजेंटेशन में एक मैम ने हमें सजेस्ट किया कि आपको विंग्स वाले पेट के बारे में भी सोचना चाहिए, और यहाँ से हमें एक नई दिशा मिली। बुकिल मैम ने हमें बोला कि आप लोग कोशिश करो, जो भी होगा हम हेल्प करेंगे, और MPCST ने हमें इसके लिए हेल्प किया, और हमने एक पायलट, हमारी टीम ने ये मशीन जो आप देख रहे हैं हमने बनाई, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, हमारी टीम ने इसे खड़ा किया। और इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन में जो बाहर ये मशीन 10-10, 12-12 लाख रुपए की बनती है ये मशीन, जब हमने स्टार्ट किया इसको बनाना तो हमें ये मात्र लगभग 4 लाख के अंदर अंदर हमारा कंप्लीट मशीन बनकर तैयार हुई। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू कि at present our 4 groups of women were linked with livelihood mission, and which semi-automatic machines were given to women by the Department of, and regular market was also provided. MPSRLM इनसे बनवाता है, पैकेजिंग अपनी करता है और मार्केट में उतारता है। और उसके अलावा जो हमारे ग्रुप है जो डायरेक्ट बनाते हैं, और हमारे पास बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हमारे भी जितने दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम एडोलसेंट गर्ल चाइल्ड के साथ काम कर रहे हैं या हम विमेन हेल्प पे काम कर रहे हैं, तो हमारे ग्रुप के पास लगातार इतना ऑर्डर है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो 12 से 15 हजार रुपए जो है वो हमारे समूह पे पास आते हैं। लगभग एक महिला 2000 to 2500 जो है वो अर्न करती है। आज जो विंग्स वाला पैड है उसका हमारे पास चौक से लैब जो है इंदौर की, वहां से हम लेबोरेटरी से टेस्टेड है हमारा पैड, और उसकी सोकिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। और अब जो ये पैड है वो 2 रुपीज का एक पड़ता है, और एक पैकेट पे हमारी एक महिला 9 से 10 रुपए जो है वो बहुत अच्छे से कमाती है, और दिन भर में काफी अच्छे से कभी 10 पैकेट कभी 15 पैकेट भी वो बना लेती है। तो ये लाइट की अवेलेबिलिटी पे भी क्योंकि काफी कुछ डिपेंड करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट्स अ वेरी वर्स्ट सिनारियो की बहुत बेकार स्थिति थी, और आज की जो स्थिति है यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि इस काम को लेकर हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला। DST ने हमें बिट्स पिलानी में हमारी संस्था ने इस विषय पर ट्रेनिंग दी है, MNIT जयपुर में हमने ट्रेनिंग दिया है, और अरुणाचल प्रदेश के किमिंग, नमसई, ईटानगर तक हम इस सब्जेक्ट पे गए हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल रोटरी लेवल पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है इस काम के लिए, और बहुत ढेरों अवार्ड्स। और हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लिए, कि जिन महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का एस नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि ये टाइम जिसे वो पैनिक टाइम समझती हैं वो टाइम भी उनके लिए बहुत इजी गोइंग हो सकता है, वो आज सेल्फ यूजर हैं। और ना सिर्फ खुद को, अपनी फैमिली को उन्होंने मोटिवेट किया, बल्कि उन्होंने अपने गांव में, अपनी फैमिली में, अपने पूरे शहर में, अपने गांव के एक एक कस्बे में लड़कियों को बताना शुरू किया कि हाँ, ये हमारे लिए, जिस तरह से हमारे लिए दोनों टाइम खाना खाना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए पीरियड्स टाइम पे सैनिटरी नैपकिन बहुत जरूरी है। एंड आज भी काफी सारा परसेंटेज जो है उसमें बदलाव आया है। नेक्स्ट प्लीज। ये यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कि जो हमारी कंडीशन थी जो पहले बिल्कुल अलग थी, और अब जो हमने काम किया तो उसमें काफी सारा जो है वो हमने बदलाव लेकर आया है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रैक्टिसेस थी। जब हमने काम शुरू किया दैट टाइम द कंडीशन कि 20% जो था वो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन तो बहुत कहना चाहिए गहरा वर्ड है, हाइजीन जैसी कुछ कंडीशन जो थी वो ग्राउंड लेवल पर बहुत ही वर्स्ट थी। और हमारे काम करने के बाद आज का सिनेरियो कम से कम जो है वो 65% चेंजेस आया है,
काफी चेंज आया है। और यूजेस ऑफ सैनिटरी नैपकिन ये 12% जो है वो शहर का मिला के है। जो हमारा जिला था बड़वानी जिला सेंधवा प्रॉपर जहाँ शहरी एरिया था वहाँ का 12% है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल 0 था। और हमारे साथ MPCST की टीम ने तक इसको विजिट किया है और अब काम करने के बाद 37% ये विलेज एरिया की कंडीशन काफी अच्छा इसमें चेंज आया है। न्यूट्रिशन और डाइट तो ऑलरेडी आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू कि मैक्सिमम पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सो न्यूट्रिशन डाइट जो था 5.5 था एंड एट प्रेजेंट काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है इसमें। और ये आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छा ड्रास्टिक अच्छा चेंज आया है। वाश प्रैक्टिसेस भी जो हैं वो लोग वाटर का यूज ही नहीं करते थे कि फ्रेश होने के बाद वो लोग पानी का यूज नहीं करते थे बिकॉज द ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है उनके बहुत सारे अपने रिलीजियस कंसेप्ट थे कि हम उसमें हम करना नहीं चाहते, पत्थर जैसी चीज को यूज करते थे। काफी लंबे समय काम करके आज अगर हम वॉश प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो 40% जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें आया है। और माल नरिशमेंट जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही उल्टे कंडीशन का था और आज उसमें भी काफी अच्छा चेंज आ रहा है धीरे धीरे। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे काम करने से टोटल सिनेरियो बदल गया, बट डेफिनेटली जहां 0 था, जहां काम ही नहीं था, जहां लोग इस सब्जेक्ट पर बात करने में झिझकते थे, उनके लिए ये एक बहुत अलग चीज थी कि हाँ इस पर भी हमारे लिए भी कोई सोच सकता है। वहां MPCST और DST की वजह से एक बहुत अच्छा सुधार आया। महिलाएं अपने बारे में सोच रही थी, महिलाएं अपने बारे में सोचने लगी और ना केवल खुद की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हैं बल्कि अपनी फैमिली को भी काफी इनकम बेस पर सपोर्ट कर पा रही हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। ये आप देख सकते हैं हमारी कुछ पेपर कटिंग्स हैं। ये हमारे 2 ब्रांड हैं आज की तारीख में। एक है मेरी सहेली और एक है नो टेंशन। बिकॉज इनिशियली जब मैं खुद फील्ड पे रही हूँ और सभी लोगों ने मेरे साथ जो लोग मेरी टीम थी और मैं जब महिलाओं से पूछती थी तो वो और लंबा घूंघट निकाल लेते थे इस सब्जेक्ट पर। और मुझे लगता है कि हम जब साइंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंस का रोल होता है कि हम कम्युनिटी को वो दे पाए साइंस के थ्रू जिसकी उसे नीड है। तो ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में हमने वो दिया, हर महिला को हमने विज्ञान के थ्रू बताया कि जिस चीजों को आप अपना 7 डेज इतना पैनिक समझते हैं, आपको लगता है कि वो एक ऐसी परेशानी है जो आपको छुपना है, बचना है, अलग रहना है, वहां MPCST और DST ने ये मौका दिया कि वो महिलाएं सबसे पहले सम्मान के साथ अपने वो 7 दिन निकालें, खुद खड़े हो पाए, हेल्दी रहें और खुद के सैनिटेशन और हेल्थ के बारे में सोचें। साथ साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इतना बेहतरीन तरीके से मिला है कि कम से कम आज वो कोविड काल तक में इनका प्रोडक्शन जो है वो रुका नहीं है। और आप यहाँ हमारे पेपर कटिंग्स देख सकते हैं, हमें मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज दिया है। महिलाएं खुद चमकाएंगी किस्मत, पैडमैन फिल्म सालों से पहले जागरूक कर रही, पैड वुमेन, और ये हमारी सारी ग्रामीण महिलाएं हैं। यहाँ बताना चाहती हूँ जो हमारे ट्रेनर भी हैं, यहाँ आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जाके हमने ट्रेनिंग दी है। हमारे लिए मुझे लगता है साइंस फॉर विमेन जो है वो ये बिल्कुल सार्थक जो टैगलाइन है आज की, वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम कर पाए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहना कि हर चीज में हम साइंस है, ये सच है, हर चीज में साइंस है। हमारी हेल्थ में है, हमारे जिन भी हम चीजों को यूज करते हैं उसमें साइंस है। तो महिलाओं के लिए साइंस सच में MPCST और DST ने इसे साबित करके दिखाया। क्योंकि हमने एक उस ग्रामीण की आखिरी छोर तक बैठी हुई महिला और बच्ची के बारे में सोचा कि जहां उसको सच में उसकी हेल्थ और काम के लिए जरूरत थी। नेक्स्ट प्लीज सर। ये आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं इनको हम लोग बाकायदा हाइट वेट करके हमने जो डेटा आपके साथ शेयर किया है वो ऐसे ही नहीं किया कि नहीं हमने बस बताया, हमने एक एक चीज हम घर घर जाके बच्चों का वेट हाइट लेके और उनके लिए हम लोग खुद ये तैयार करते हैं फूड, स्टेपल फूड, कि उनके गांव में क्या है। हमने ये नहीं कहते कि आप मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, क्योंकि लेक्चर देना बहुत इजी है और जो उनकी कंडीशन होती है उस कंडीशन पर उनके साथ ये सोचना भी कि वो ये खा पाएंगे मुश्किल है। तो हम लोग लोकल लेवल पर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं से हम उनको बनाना सिखाते हैं कि इन चीजों से आप कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं न्यूट्रिशियस फूड और आप अपने
अपने को और अपने बच्चों को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग खुद, हमारी पूरी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, बनाना सिखाते हैं, फिर महिलाओं से बनवाते हैं, फिर वहां पर सारे पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा करके, महिलाओं को, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, एडोलेसेंट गर्ल, उनको इकट्ठा करके खिलाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं करते, बिकॉज बिहेवियर चेंज इन द सोशल सेक्टर इट्स अ वेरी टफ टास्क, इट्स नॉट अ वेरी इजी कि मैं रातों रात कहीं जाऊं और बोलूं कि ये नहीं ये खाओ, तो कोई हमसे एग्री नहीं करेगा। सो दैट्स वाई हम इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं हम वो टाइम टू टाइम महीने में कभी कभी 2 बार 3 बार भी हम करते हैं, क्योंकि जब तक मैं किसी को बोलूं कि जामुन बेचने के लिए जाओ, पर अगर उसको जामुन का टेस्ट नहीं पता तो वो अच्छा जामुन नहीं बेच पाएगा। तो सबसे पहले सेल्फ यूजर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि व्यक्ति को अगर पता हो कि वो जो चीज बेचने जा रहा है वो बहुत अच्छी है, जो चीज खाने जा रहा है वो बहुत अच्छी है। दैट्स वाई कि हम दोनों प्रोग्राम अपने साइमल्टेनियसली चलाते हैं। सैनिटरी नैपकिन भी हमने कम से कम एक महिला को 30 महीने तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। फिर हमने हर महिला की एक गुल्लक बनवाई ग्रुप में कि रोज एक महिला रोज 1 रुपया इस गुल्लक में डालेगी और 30 दिन में 30 रुपए होते हैं, 20 रुपए का आपका पैकेट आ जाएगा, 10 रुपए फिर बचेंगे, आप यूज करें। तो उनको फिर ऐसी बचत की आदत भी डली। बचत की आदत के साथ साथ उन्होंने, उनके पास आर्थिक रूप से भी निर्भरता आई। और सबसे जिस चीज के लिए मैं और हमारी पूरी टीम बहुत खुश है वो ये है कि जो महिलाएं ऐश जैसी चीजें यूज करते थे, डर्टी क्लोथ यूज करते थे, आज वो बहुत स्मार्टली जी पा रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हेल्थ वाइज भी। So we all are very grateful to entire team of MPCST, MapCost and DST. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Oh, wonderful, madam. Excellent presentation. Thank you, sir. Thank you so much. Related to many activities which you have taken up, and you have seen the scenario of certain pockets of Madhya Pradesh. As you have very rightly, actually, the important part of your presentation was that your outcome was quantified. And that quantified outcome is very important if you want to show the success story. As you said that unhygienic conditions which are there at 20%, they have, that hygiene it has been improved and 65% hygiene has been taken up. Similarly, you have said that malnutrition which was 53%, that has been reduced to 18%. That is very important. Similarly, another point, anemia. As you said that 55% anemia has been reduced to 28%. That is really a very big achievement. And I think that these sort of things should be documented at one place and should be submitted to the government of India so that we could be able to show the really the success stories of Madhya Pradesh at the national level. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज जब हम बहुत जूझ रहे थे इस चीज से कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा था कि हम अपनी महिलाओं को मशीन कहाँ से लाएं, तब डॉक्टर सरोज बोकिल और मैपकॉस्ट की पूरी टीम ने खड़े होकर हमें बहुत हेल्प किया। और आज भी हमारी जो महिलाएं हैं जो ग्रुप में काम कर रही हैं, उन्हें दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए आते हैं। तो हार्टली वी आर वेरी थैंकफुल टू एंटायर टीम ऑफ MPCST एंड DST सर। थैंक यू वेरी मच। So kind of you. We are extremely indebted to you for joining with us on this occasion and giving a very, very important information to the forum. Thank you very much. Now, there is a program of Department of Science and Technology, as I have earlier said, a women scientist program, where science and technology interventions are going on. And we have requested some 3 persons because there are so many in Madhya Pradesh, but we could be able to identify only 3 because we were having a limited time. So now we are requesting Dr. Shubhra Dhar, who is an awardee and presently working at IIITM Gwalior. Dr. Shubhra Dhar, would you kindly, I am thankful to you for keeping on waiting since 10:45, and we are extremely thankful to you for joining us. And I would request you to kindly restrict if you could be able to for 5 minutes, please. हेलो, am I audible? जी आपकी आवाज आ रही है। जी sir. Good afternoon everybody. I'm going to share my screen. Can I get the permission to share my screen? Share screen. Permission. शेयर करेंगे।
Sir, are you able to see the screen? आपकी slide दिखाई दे रही है. Okay, okay, fine. So, good afternoon, everybody. I'm extremely happy and honored to be a part of this elite gathering among such eminent men and women here. I really, really am thankful to DST and MPCST for this, for giving me this opportunity to hear each and every person, starting with our Anil Kothari ji and our Habib sir, and from that part of the program. So I would like to give a special mention, a special good afternoon to Professor Renu Jain Madam, whom I have known for the last 15 years because she's from Gwalior, and she has been a immense source of inspiration to me. So good afternoon, ma'am, and thank you for being in the space where you have been, and because I was a silent spectator from a long distance. So I remember those days. Thank you. So to begin, I wanted to say actually many things, being because I believe I'm in the last segment of the program. So all the eminent speakers have put together such wonderful points that I am left with nothing to say. So if I have to just give what is remaining is actually my own experience over here. And so we have heard this in the last decade, right? The world needs science and science needs women. But I believe I am an 80s child. My schooling was done in 80s. So I believe this particular phrase was there somewhere in the brains of my school teachers and my parents, who put science as it was put to me. Like, I want to mention my science teachers back in school: Subramaniam sir, Balaji sir, MVS sir. All these people, they had they taught science in such a way that nothing else entered my brain that time. This is, I'm talking about my high school. And my parents encouraged me and my brother to go only for higher education. It was never like, nahi, ladki science nahi padegi, ladka padega, and all of that. My brother is a doctorate in chemistry. I am a doctorate in physics. So hamare ghar mein it was never that sort of things, which unfortunately aaj bhi hame dikhta hai in 2022. घरों में दिखता है कि लड़कियों को ये पढ़ाएंगे, लड़कों को वो पढ़ाएंगे. So I have to thank my stars for having taken birth in to my parents at that point of time, where till today I have not received any bias. And honestly, why I came into science, I mean, why science was throughout me, because I found it easier than most other subjects. So this is how I entered science, and it kept me investment throughout my schooling and college, and which is why a certain amount of scientific aptitude and temperament was built in me. And which as my parents wanted me to go for higher education, and they have not given me any choice of, you go in this direction. So physics was the most easy subject I took up that time, because mujhe physics automatically easy lagne lagta tha. So I said, okay, I'm going to do masters in physics. That moment I never had anything like nahi, research karna hai and all of that. Just because physics appeared easy to me, I took physics. It can be a very lame thing to say, but then I had one thing in my mind after the completion of my masters, that अभी teaching करना है और मुझे जो अच्छा लगा, okay, I उसे परोसना है दूसरों को. Hello, am I audible, sir? Hello. Please. Next slide. So I had taken up teaching just immediately after finishing my masters, and in an international school. It was truly international. I was chosen for a teacher exchange program to Chicago way back in the 1996. So I enjoyed teaching, and my only motivation was कि physics को आसान से आसान तरीके से कैसे परोसा जाए to the high school students, all the high school starting from 6th, 7th class till 12th, ताकि they come from their schooling, उनको physics में इतना लगाव हो जाए, you can term it as a very selfish motive. Okay, I agree to it, that I was very selfish at that moment. मुझे लगता था कि my students physics से बेहद प्यार करना चाहिए बस. So my motivation as a teacher was only in all the schools I have worked. I have worked in CBSE, I have worked in ICSE, and also as a lecturer in government college teaching BTech, material science and physics.
So in every step of this way, throughout my 10 years of teaching, my only objective was to physics ko aasan banana hai. That's it. Because whenever I used to help PTMs and all of that, it is an ingrained thing in the society. I've seen, अरे लड़कियों को कैसे physics समझ में आएगा, maths कैसे समझ में आएगा, it's so tough, you know, कैसे let them just finish this 10th standard, उसके बाद तो arts वार्ट्स कुछ ले लेंगे. So that used to hurt me to no level. So I used to take it at such a personal you know, attack sort of thing. I know it might be hilarious at this moment, but that was my main objective. So I am glad to say that after my 10 years of teaching physics to various students throughout the country, I have taught in South, I have taught in North. Right now in Gwalior also I have done 2 years of teaching, and my children, my students are all over the country. Many of them are settled in abroad. I am really, really happy for what I have done at that time. So after that, but then I was getting stagnant somewhere, and that is when my husband suggested that you have to complete your education with a research work. So I don't know what he saw in me, that you know, that spark or something like that. So I took up a PhD after a massive 12-year gap. So I hope all of you, all the scientists present over here, they understand what is high school teaching and what is research. It is a massive leap. So I took up that, and believe me, it took a lot of courage to overcome the hesitation when I was sharing the lab, because my subject was nanotechnology and nanoscience. So I had to be in a lab. So I was sharing the lab with 20-year-olds. Okay. So it was a huge hesitation for me, unse cheeze seekhna. But then again, I pushed myself, definitely with my support of my entire family. Meri beti was in junior school that time, and sometimes I had to bring her to the lab also. So successfully I did my PhD, and after that I was offered a research associateship, and that too was completed successfully for 3 years. Uske baad my daughter came to 10th standard. That is when I decided to take a break, kyunki 12th, iske baad she is going to leave me, right, her higher education. So I had opted for a break at that moment. Lekin what happened, research karke, I mean 4 years of PhD, 3 years of RA-ship, 7 years ka jo research karke mere dimag mein, you know, because my topic was very interesting, low power VLSI applications, and in RA-ship I was working with graphene, which was a 2D wonder material at that moment. So I could not be sitting idle. मतलब दिमाग तो चलता ही रहता है ना. See, घर में चाहे आप break ले लो, you are helping your child with her work and all of that, but हमारा दिमाग तो चल पड़ता है, isn't it? It is never stationary anytime. So I was playing with various ideas at that moment कि इस low power को और उस graphene को कैसे मिलाया जाए, right? So then again, my husband came up with this DST Vice Kiran thing. So he's the one who guided me towards this. And I used to take my child to coaching center. तो वो अपना NTSC का कोचिंग कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे लेके जाना पड़ता था, बिकॉज वी स्टे आउटस्कर्ट्स में रहते हैं हम लोग ग्वालियर के. सो तो उसके साथ बैठना था मुझे, और उसे साथ लेके आती थी मैं रात को. तो इट वॉज अराउंड सम 5-6 hours ऑफ गैप एट दैट मोमेंट. तो होता ये था कि I used to take my laptop with me, and it's बहुत सारा review papers, literature survey, and the ideas I had in my mind. इन तीनों को put up करके at a time span of 3 months, I wrote the proposal sitting at the coaching center of my daughter. So I really have to be thankful to them also. Okay. So then I presented this proposal to the committee, DST committee, and thankfully I got selected for this. And I would want to say here one thing, that this particular scheme has really helped me, people like me who are bubbling with ideas, लेकिन उनको अपने घर का भी देखना पड़ता है. Like if there are aged people, yeah, like in-laws है, parents है, we have to attend to them as well. बच्चे का 10th boards चल रहा है, we have to assist them. So ये जो important breaks है, या तो फिर if there are younger women, उनकी जो pregnancy का period है. So this DST Vice Kiran scheme is such a blessing to all us women, that is making them
helpful to re-enter into the mainstream. And this is also having many other schemes, I mean, sub-schemes in this, in which self-employment is being promoted. Many women are doing that. And many women are also opting for permanent positions after this. So I wanted to work as a bench level scientist. So I am seriously blessed to have this award in my life at this juncture, especially. Otherwise, I think it would have gone really, really hopeless for me agar mujhe 3 saal बैठ जाना पड़ता with the bubbling ideas in my mind. So entire thanks to this, and all the people who I was surrounded by at that moment, starting with my husband, starting with my daughter, उसने भी बहुत, you know, मम्मी सारा time पढ़ती रहती है, so like that. And of course all the blessings of my mentors. I had excellent mentors and to support me. So this is my work. Actually, I should have included some figures and data, but I could not. I believe because of the time limit, I could not enter. So this is my work. This is a design and performance evaluation of 2D materials in MOS devices for low power VLSI applications. So these are few of the results. So here what happened is, because of the scientific aptitude which I was talking about, this has, my entire pursuit has finally led me to my philosophy of life. तो philosophy कैसे बन गया life का कि possibility thinking. So after the reception of this award, I only could say in one word कि भाई philosophy of life तुम्हारा कैसे बदल गया. So I say it is possibility thinking. So anything is possible. Believe in possibility thinking. Believe in existing solutions. अगर हमारे पास कोई problem है, okay, we are bound to have at least one solution. Infinite भी हो सकता है, zero कभी नहीं होगा. No problem comes with zero solution. वो सिर्फ हमें हमारे देखने की, you know, the perspective we have. So science to me is that particular instrument which helps me believe in existing solutions and therefore come across as problem solver. So personal takeaway, before I talk about my personal takeaway, all of us know research में output हमें देना होता है, या फिर we are supposed to give our output in the terms of conferences, in the terms of publications, international publications. So मेरे भी है. So I believe in good paper publication, SC journal, impact factor journal, presenting in conferences. That is all the you know, measurable thing that I got out of all my projects, especially this DST Vice Kiran. But then apart from this, at the end of this 3 years or 4 years, since the time of conception of the idea, मुझे क्या मिला जो the thing what I was saying कि ये conferences, publications, वो तो written है उसमें. Okay, it will be shown in my biodata, that's fine. But what is not seen, only I can feel as a recipient of this award, are few of these things. So I believe I was born confident, no doubt. My mom says that so. But then, ये जब हम as women, especially why I want to include this, all women are confident. So that is the reason what they are doing. चाहे हम आज के speakers की बात करें या all the women out there, whoever are doing whatever they are doing, they are confident about what they are doing, no doubt about that. But throughout our entire life, at the different phases of our life, we come across so many challenges कि वो confidence कहीं ना कहीं हिल जाता है, थोड़ा lower हो जाता है. It takes a valley and it takes a push. कोई अगर पुश कर दे या फिर खुद से ही you know, self confidence वो push, you know, we can overcome that valley. So again we can move on to the peak. So ये जो confidence वाली बात है, this is what I'm trying to explain, that this DST Vice Kiran has given me this kind of confidence, and definitely it boosted my self-esteem कि मैंने खुद proposal लिखा which was unthinkable for me when I was doing my PhD or when I was teaching. So this is completely unthinkable thing. Okay, so अगर मैं खुद को, if I am judging my own self and my career till now, so this self-esteem is an added bonus for me. Courage, what do you mean by courage? Courage is the thing which helped me think beyond. कि अरे चलो सोच के देखते हैं. If there is a problem, ये problem define भी मैंने ही किया है. I have defined this problem, so I know what am I supposed to do. But then खुद के जो, you know, when you churn things, when you read a lot of literature and you're talking in the academia about this particular arena, that my arena is nanoscience and nanotechnology.
सो आप में वो करेज आ जाता है कि ओके देन मैं तो ऐसे भी सोच सकती हूँ, आई कैन थिंक दिस वे, तो चलो करते हैं. ओके, सो फ्रीडम, दैट इज व्हाई फ्रीडम कम्स नेक्स्ट, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज गिवन टू वन सिंगल पर्सन. ओके, आई डोंट हैव एनी हेल्प, आई डोंट हैव एनी असिस्टेंट. इट इज प्रपोजल कंसेप्शन से लेके अभी फाइनल यूसी बनाने तक, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट बनाने तक, इट्स एंटायरली मी, इट्स एंटायरली मी. ओके, सो दिस फ्रीडम इज बीइंग अलाउड टू एक्सप्रेस कि मैं इस काम को कैसे करूं, एंड target oriented, that it is 3 years job. So anyway, 3 years is a bit less according to me. I would be really happy if they extend it to 4 years. क्योंकि जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर वी आर इनटू प्रोक्योरमेंट्स एंड ऑल द इनिशियल लिटरेचर सर्वे एंड ऑल ऑफ दैट टेक्स अ फर्स्ट ईयर ऑफ इट, सो effectively we are left with 2 years only. So but still, since it is target oriented, we are always on the move कि भाई अब करना है, we have to achieve this, right? And at the same time it has given me immense job satisfaction, and since it kept me on my toes, right? And definitely it clarity नहीं होने से research नहीं होगा, everybody knows that, right? But why especially talk about clarity is क्योंकि ये problem आपने खुद define किया हुआ है. This is a proposal written by your own hands, by your own brain. तो यहाँ पे आपको clearly सोचना ही पड़ेगा कि how far you can go into this. So this is where again जो पहले से ही क्लियर हैं, we are clear, लेकिन जैसे जैसे एक एक स्टेप करके एक एक साल बीतता गया इस प्रोजेक्ट का, I become a more clear thinker. So this is a huge takeaway from this particular award for me, and not to say about the creative boost that I have received. So now for me, having said about my work in this, my experiences, I still would like to add, जैसे कि I have heard two speakers, मनीषा मैम ने बोला during her presentation she was talking about कुछ एक project है उनका जिसमें teaching mothers mathematics, that struck me immensely कि अगर ये बात हो जाए कि माओं को अगर हम मैथ्स एंड साइंस थोड़ा पढ़ा दे, ये जो फियर है, फियर एट द लेवल जूनियर्स, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके आगे तक, व्हाई विमेन डोंट कम इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इतना ज्यादा हम क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ऑफ नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत ये लड़कों वाली चीजें हैं, इतना नहीं सोच पाओगी. सो दिस इज वेयर आई थिंक मनीषा मैम का दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टीचिंग मदर्स मैथमेटिक्स इज सच मतलब हेल्प. And from my own side, I have earmarked actually the decade that we have just entered. We are just 2 years old into the new decade. So I believe these five areas should be earmarked for more and more women from the science and technology in this particular decade. क्योंकि इस decade में we have to work towards this green energy. We have to think about all these viruses we know about, that is in the pandemic context, and definitely this climate and energy. Okay, and not to forget about the brain science, the neuroscience, the cognition, the mental health. So I believe, this is entirely my personal opinion, I am very well aware that many women have explored, have really moved into almost all areas of science. लेकिन फिर भी मुझे लगता है this particular decade should be more welcoming these areas should be more welcoming to women. क्यों? Just because I believe that as Madam Kapoor was saying, women and men karke, let's not do it like that, let's put human beings first. That was an amazing statement what she made. I sincerely believe in that. So इसमें stereotype नहीं करना है, right? But having said that, we women really have कुछ अलग बातें हैं हमें, like we are a bit more sensitive, I believe. We are a bit more devoted, not to demean here anybody, not to disrespect anybody here. I believe we are more understanding, more cooperative. जैसे कि हमने शालिनी मैडम का पूरा प्रेजेंटेशन में हमने देखा how she came up with that sanitary napkin, the entire project. वो अगर cooperation नहीं होता
तो नहीं होता, ये प्रोजेक्ट ही नहीं होता। वो अगर एम्पैथेटिक नहीं होती, द एंटायर पीपल, ऑल द पीपल रिलेटेड टू द एंटायर प्रोजेक्ट, राइट? सो दीज फ्यू क्वालिटीज, हम सब में है, all human beings, we definitely have all of them, but these few, sensitivity, devotion, understanding, being cooperative and empathy, so will definitely make women should actually acknowledge these qualities and then come forward to enter areas of science. And the reason why I have a personal view over this, like why I want women should come into SNT, more of them, simply because they variety of experiences. और ये कहाँ से, ये वही the 5 qualities which I have said, and once they imbibe all of this and put it in these fields of science and technology, our society is really going to benefit as a whole. And let us remember that scientific research is more accurate when gender is considered, simply because women bring unique perspectives to research and scientific conversation, जो कि हमने पैंडेमिक टाइम में, चाहे वो इंग्लैंड लंदन के लैब्स में से लेके हमारे पुणे के लैब्स तक हमने देखा हुआ है. सो दैट वाज अमेजिंग. बट हियर मेरा सिर्फ एक ही है, आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, राइट? सो बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, आई स्टिल थिंक we really need to work towards our young girls. So this wise fraternity जो हम सारे हैं, in this particular meeting and beyond, the entire wise community, it should be working as a role model for young girls, and let's teach them the skills needed and actively encourage them towards it without fear of the sciences. Physics ना पढ़े, never mind, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, मैथ्स कर लो, टेक अ लाइकिंग टुवर्ड्स एनी ऑफ दिस. तो हमें स्किल्स और एनकरेज ऐसे करना है, लेट अस पुट इट इन द प्लैटर. उनको लेने ले दीजिए, लेट देम टेक, लेट देम पिक एंड चूज. ओके, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है. So, but then till the 10th level or the 12th level, I have seriously believed in one thing throughout my entire career in science, that any woman, if she, let her be a housewife, never mind, agar usne basic 10th या 12th तक science करी है, she will definitely contribute to the society in whichever way possible. It can be as simple as clear thinking, it can be as simple as rationality, it can be as simple as going beyond superstitions, or it can be till आसमान छू लेने तक आप साइंटिस्ट बन जाओ, नोबेल प्राइज तक का स्कोप है. So this is why I actively feel that careers in science and technology will surely help change the distorting numbers right now which we are having. One of our speakers was showing that, towards diverse workforce. So thank you all for giving me this excellent opportunity, and I'm really honored to being a part of this program which is being conducted by MPCST and DST. Thank you all. A very good afternoon to all of you. Thank you, madam. A wonderful presentation, and really I was amazed to see that, and I would like to congratulate the team of organizers from MP Council of Science and Technology to identify such a wonderful speakers and wonderful scientists to participate in the program. We are extremely thankful to you for sharing that very important experience. And as you said that takeaway from this award is DST Vice Kiran. Instead of certain things, that self-esteem, then courage, freedom, target, then exploring the sales, enhanced job satisfaction, challenging, clarity, creative boost, all that you have come out with all that kind of thing. As Dr. Neelkamal Kapoor, she also said that science and technology input towards the psychology is also an important part. Yes. Very true. Yes. Very true. You have come out with a very important takeaway from this award, as you said. And as one of the statement I really like, that wise fraternity is the role model for young girls. Yes, surely. I'm extremely thankful to you for joining with us. And really, if I want to put who is the best presentation, I'm really this that. And all the presentations are wonderful. And now we have reached to the last presentation by Dr. Deepa Iyer. She was
Vice Chair DST awardee, and she is working fortunately with the MP Council of Science and Technology. I would request Dr. Deepa here to make her presentation. Dr. Thank you, Deepa. sir. Good afternoon to everyone present here. I, Deepa here, would like to extend my gratitude to Honorable, the Chief Guest of the day, Dr. Renu Jain ma'am, and all the special guests of the day, respected Director General Dr. Anil Kothari sir, our Executive Director Shri Habib sir, Dr. Manisha Jyotishi ma'am, Senior Principal Scientist, Dr. Anita Tilwadi ma'am, Mrs. Neeta Srivastava ma'am, Dr. Nilima ma'am. Currently I am pursuing as a Principal Investigator in Women Scientist GST project at Quality Assurance Laboratory from Madhya Pradesh Council of Science and Technology, under the mentorship of Dr. Nafisa Siddiqui ma'am. Before going to my profile, I would like to share that this was a project, Women Scientist project, has been proved as a turning point in my career. I made a mark in my profession. I had a keen interest in research area, but due to some family responsibility, I had to take break in my career. But seeing my research aptitude, my family supported me and motivated me to pursue my postdoctoral research work. So after that, I have applied this Women Scientist project. And actually, this project, I got this project in this third attempt after continuous efforts. So just going to brief my profile, this academic background, I have done my PhD in Pharmaceutical Sciences in the year 2013 from Rajiv Gandhi Technical University, Bhopal. I have done my little bit work in Naipar Mohali also. I have done M.Pharma in Pharmacognosy and Natural Product subject in the year 2006 and B.Pharm in 2004 from Department of Pharmacy, Bhatkar University, Bhopal. Simultaneously, I have qualified GATE in the year 2004. Next, please. Before pursuing this Women Scientist project, I have been associated in teaching and I have got 15 years of teaching experience. I was appointed as principal and associated as professor in Swami Vivekananda College of Pharmacy. And I have also associated with few other institutes like Venus Institute of Pharmacy and Lakshmi College of Pharmacy. I started my career as a lecturer in Shriram Institute of Pharmacy, Jabalpur. Basically, I have done my PhD work in Jawaharlal Nehru PhD work on phytochemical and pharmacological screening of some medicinal plants with anti-hyperlipidemic activity and development of formulation under the guidance of Dr. Umesh Kumar Patil sir from RGP. I have also took my M.Pharm dissertation project on radioactivity and tumor tech inhibitory activity on curry leaves in mice in the year 2006 under the supervision of a great lady, Dr. P. Uma Devi Madam, Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Center, and also under the guidance of my HOD, A.K. Pathak sir, Department of Pharmacy, Bharkal University, Bhopal. I have also awarded Fellowship for Training in Young Scientists from this Madhya Pradesh Council of Science and Technology in the year 2014 in 29th MP Young Scientist Congress. I also awarded research project grant on phytochemical and pharmacological screening of Aconitum heterophyllum and Apium graveolens medicinal plants with special reference to anti-hyperlipidemic activity, again funded by MAP Cost Bhopal in the year 2015. I have nearly 30 publications in international national journals. Here, some of the STI index journal with having impact factor is enlisted, like in Pharmaceutical Biology, Chinese Journal of Integrative Medicine, Planta Medica, etc. Last but not the least, I am really thankful to MPCST for providing me such a big platform to pursue my postdoctoral research work. I am also grateful to my mentor, my QL senior staff, for their unconditional support during this research tenure. Thank you very much. Thank you once again. Thank you, Dr. Deepa, for sharing your entire biography and also related to what exactly you have achieved during an entire period of this thing. And the support which you got from MP Council of Science and Technology, especially under some of the programs like you were a young scientist awardee also, and you might have availed that fellowship for training of young scientists also. And that was also an important initiative of MP Council of Science and Technology.
And apart from that, you have published a very good impact factor papers also in good national and international journals. We congratulate you for this, and we wish that you will keep on in contact with MP Council of Science and Technology and availing all sort of facilities which are available with us. And we will definitely be happy to extend all those to you. Sure. Thank you very much. Now we have come to the last person to say a few things regarding what we have heard since morning, and especially from various eminent speakers. We have with us Dr. Anita Tiwari, who is a senior scientist at Center of Excellence in Biotechnology at Madhya Pradesh Council of Science and Technology. And she is also a person who was instrumental in providing a lot of support to various Vice Kiran awardees for various kind of fellowships. And she is also from Pharmaceutical Sciences. And may I request Dr. Anita Tiwari to please convey a vote of thanks to our speakers, please. Dr. Anita Tiwari. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank our Prime Minister, Dr. Narendra Modi, sir, for launching such a wonderful scheme, that is 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, from where we have learned about many scientific inputs in different states of India. And after then, I would like to extend my heartiest thanks to Dr. Devpriya Datta, who is as advisor, Department of Science and Technology, who formulated, initiated, and implemented this program for a whole year, from August 2021 to August 2022. With that, I would also like to thank Dr. Rashmi Sharma, Scientist F, Seed and SSTP Division of Department of Science and Technology, Government of India, for this implementation of this program. It is our privilege to thank our Director General, Professor Anil Kothari, sir, for being the catalyst behind this program, who stimulated us to do the best and standing as a pillar of the strength for the program. I also want to express my sincere gratitude to our chief guest, Dr. Renu Jain Madam, Vice Chancellor, Devi Ahilyabai Vishwavidyalaya, Indore, who spared her spacious time from her busy schedule to grace this occasion, and also enlighten all of us with innovative ideas for women in science and technology for women. My sincere thanks also due to our special guest, Dr. Janet Palta McGilligan Madam, who is a Padma Shri, and she is a social worker and also a founder director of Jimmy McGilligan Center for Sustainable Development. And she has done a lot of work for rural, for upliftment of rural women. And also she has trained 600 women in Madhya Pradesh, rural women in Madhya Pradesh, for their future career also, and also for the sustainable livelihood. I would like to thank our other special guest, Dr. Neel Kamal Kapoor Madam, who has emphasized on the special role of women, and also, of course, as a human being, as she said in her speech. I also would like to thank Dr. Anuradha, Miss Anuradha Singhai Madam. She is from a SEDMEP, Madhya Pradesh, and for gracing this occasion. And she has given good, important views and the role of women in science and technology. Also explained about the activities which are going on with the SEDMEP and how they are encouraging women and how they are uplifting the women in Madhya Pradesh with the SEDMEP institution. I would also like to thank all the women, basically the successful women, I must say, those got support from this Madhya Pradesh Council of Science and Technology, and also got success in their career. So they have explained and narrated the success stories of their after getting the funds or fellowships or a grant from the MP Council of Science and Technology. Dr. Pooja Pandey, Professor Kamini Jain, and Mrs. Shalini Saxena Madam. They are they had narrated the success story after getting the grant from the MP Council of Science and Technology. I'd also like to thank the awardees of Vice Kiran from Department of Science and Technology, Dr. Shubhra Dhar Madam and Dr. Deepa Iyer,
awardee from who is working in the MP Council of Science and Technology, and Dr. Shubhra Dhar madam. She is awardee in ABV Triple ITM Gwalior. She is working in Triple ITM Gwalior, and they had narrated very good how they have, after a long time of after a long gap in their career, how they have enriched themselves and how they reached to this platform where they are doing good work, good job, and they are even publishing good impact factor and STI journals papers. So I would like to thank everyone. I would like to thank, if I'm not thanking or I'm failing to thank Dr. Shri Tasneem Habib sir, Executive Director, MP Council of Science and Technology, basically who supported us from initiation of this program and for to the successful end of this program. The whole program which we have initiated for this Women in Science and Technology and Science and Technology in Women is the whole program which is guided by Shri Tasneem Habib sir, Executive Director, MP Council of Science and Technology. Last but not the least, a big thank to our team coordinator, Dr. Manisha Jyotsi madam, who is Senior Principal Scientist, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, who has done this whole program is initiated, implemented today, is by Dr. Manisha Jyotsi madam and the team. Miss Nilima Agaraiya madam, Mrs. Neeta Srivastava madam, and others, Lalit ji and Praveen ji, those who are sitting in front of me, they have who worked behind the scene to make this event successful. At the end, I would like to express my thanks to the scientists from MP Council of Science and Technology and the audience from different states, different states Council of Science and Technology, who has participated and in this program and being here to increase the pride of this event with their presence. So thank you very much. And finally, I would thank the whole team of Madhya Pradesh Council of Science and Technology who has backed up with all the facilities which are present today. And we are just in communication with you all. So thank you very much, sir. Thank you, Dr. Anita. Before we close, we would request all the participants to please open their videos so that we could have a group photograph. All the participants who are present may please open their video. Thank you. So with this, we would like to close the program and with a very big round of applause to the organizers of MP Council of Science and Technologies and also to the very wonderful speakers from across the state. We are extremely thankful to all of you. Thank you very much. And we hope to join with you in the near future regarding other programs also. Thank you very much. Okay. Thank you.